झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की रजिस्ट्रार आदरणीय श्री अमर चौधरी सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। एक उत्साहवर्धक दिवस की एक ऊर्जावान सुबह है ये। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हमारी परंपरा रही है। कहते हैं अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और यही सम्मान की भावनाएं हमारे मंचासीन अतिथि गणों तक हम कर रहे हैं। यकीनन आज की ये कार्यशाला कई मुद्दों के साथ हमारे सामने आएगी और उन मुद्दों के समाधान के साथ हमारे सामने आएगी। और अब तमसोमा ज्योतिर्गमय, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। सुदृढ़ और समुचित ये रोशनी हमेशा हमारे बीच आते रहे। इस रोशनी के लिए हम दीप प्रज्वलित करें। इसके पहले सम्मान की कुछ और भावनाएं हैं। हम कहते हैं जब घर आंगन हमारे अतिथि आते हैं तो भावनाएं प्रवाहित होने लगती हैं, और कभी हम नन्हे पौधे के साथ और कभी शॉल के साथ हम अपनी भावनाओं का संप्रेषण अपने अतिथि गणों तक करते हैं। यही हमारी भारत की समृद्ध सी परंपरा है, ये कहते हुए कि अतिथि देवो भव। ये शॉल तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होनी चाहिए। एक अच्छे उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट आरब झारखंड को साइबर डिफेंस के क्षेत्र में हम वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना चाहते हैं, और इसके लिए हम सबके संकल्पों का होना बहुत जरूरी है। संजय बहल सर के लिए ये शॉल। यूँ तो झारखंड को हम खनिजों खजानों का प्रदेश मानते हैं, लेकिन झारखंड संभावनाओं से लबरेज प्रदेश भी है, जहाँ पर हम हर क्षेत्र में तरक्की के नए आयाम गढ़ रहे हैं। यहाँ पर आईटी के सेक्टर में भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्व में अपना नाम अर्जित किया है। राहुल पुरवार सर के लिए सेक्रेटरी हायर टेक्निकल एजुकेशन राहुल पुरवार सर, ये शशांक गौरियार सर के लिए ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और आइए अब उस रोशनी की ओर चलें जो रोशनी आज की कार्यशाला को आलोकित करती रहे। सुदृढ़ और समुचित साइबर सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण डाटा कंप्यूटर में उपलब्ध सूचनाओं को हम सुरक्षित रख सकें, इसके लिए एक कार्य योजना जरूरी है, और उस कार्य योजना पर संजीदगी से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस कार्यशाला के माध्यम से हम कुछ ऐसा कर सकें, इस हेतु संकल्पों का और साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। May I request dignitaries on the dais to kindly light the lamp and give auspicious start to this workshop. Friends, light is an universal symbol of truth, courage, knowledge and brightness. हम चाहते हैं ये आलोक, ये चमक, ये रोशनी हमारे हर कार्य क्षेत्र में हो। इतने तमाम अतिथिगण जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यकीनन आप स्कॉलर्स हैं, यकीनन आप बुद्धिजीवी हैं। आप सबका साझा प्रयास, आप सबके विचार आज के इस कार्यशाला को बहुत बड़ा बनाएंगे और इसके उद्देश्य तक पहुंचाएंगे। प्रोजेक्ट आरब संकल्पनाओं से भरा ये प्रोजेक्ट है, कार्य योजना से भरा ये प्रोजेक्ट है, जिसका शुभारंभ हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। हमारे गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर जो कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं, हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भी हैं। ये दीप प्रज्वलन हमारे गणमान्य अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा। जब हम बात करते हैं झारखंड में साइबर डिफेंस कॉरिडोर को डेवलप करने की, तो शायद हम में से बहुतों के मन में ये विचार आता है कि ये काम थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं जब जब
आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। आइए साथ साथ चलने का ये आह्वान यहाँ पर अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन। प्रयासों की रोशनी कभी मध्यम न हो, दिए की रोशनी कभी धीमी न हो। आलोकित हो हमारा पथ, आलोकित हो हमारे प्रयास और आलोकित हो हमारे सपने। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु। और इन अविस्मरणीय से पलों को हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं ताकि हमें हमेशा वो प्रेरणा मिलती रहे कि इस तरह के साझा प्रयासों में हम फिर एक बार आएं। एक बार पुनः आभार और धन्यवाद अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन के लिए। और आइए इस चमकती रोशनी के बीच अपनी मातृभूमि की वंदना करें, ये कहते हुए कि वंदन मेरे देश, पूजन अर्चन नमन मेरे देश। और निवेदन करना चाहती हूँ डायरेक्टर साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन डॉक्टर ममता वर्मा मैम से कि कृपया आप आएं और सामूहिक राष्ट्रगीत की अगुवाई करें। और आप सभी लोगों से गुजारिश होगी कि कृपया राष्ट्रगीत के सम्मान में आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये निवेदन आप सभी से। आप सबों के बैग में वंदे मातरम का एक पेज रखा हुआ है, जिनको याद नहीं है आप उसे निकाल लें। ममता वर्मा मैम प्लीज। Will together recite Vande Mataram. 3, 2, 1. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujara Sufara Malaya Jashikara Shashya Shyamala Mataram. Vande Mataram. Shubhra Jyotsna Pulakitayaminim Fullakusumita Drumadala Shobhinim Shubhasinim Sumadhuravasinim Sukhadam Varadam Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और एक निवेदन आगे बढ़ने से पहले कृपया संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखेंगे। साथियों, बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक सुबह है। झारखंड को विश्व भर में साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में पहचान दिलाने के संकल्प के साथ आज की ये कार्यशाला हमारा है प्रोजेक्ट आरब। वर्तमान में हम में से अधिकांश लोग कई तरह के डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का प्रयोग कर इंपॉर्टेंट डेटा को शेयर भी कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रखने की चिंता भी करते हैं। ऐसे में डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करना बेहद ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम इन्हें साइबर अटैक से दूर रख सकें। इसी विषय पर अपने विशिष्ट विचारों के साथ जब गणमान्य अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है, ऐसे में ही स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ वाइस चांसलर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आचार्य विजय पांडे सर से।
Thank you, ma'am. Respected dignitaries and all participants present here, आप सभी को नमस्कार और जोहार. As the world embraces asymmetric cyber war as part of Ukraine crisis, need for cyber defender has grown multifold. India has shown its grit and captured information technology market world over. It's time to repeat the story in the field of cyber defense. World is witnessing a series ransomware attack, and every 10 seconds an attack surface. New generation attack is very crippling critical infrastructure. At the same time, as per Michelle Page, world's largest human resource company, there is no taker for more than 3.1 million jobs world over in cyber defense engineering. World will have a deficit of 7.8 million cyber engineering resources by 2025, and India shall witness a shortfall of 1.5 million cyber engineers at the same time. Time is apt to plan and execute cyber capacity and competency building journey. Today's workshop aims at brainstorming and documenting strategic and tactical planning for making Jharkhand a preferred cyber defense corridor of the world. Together as one team, we shall work together as a partner, and academia, industry, researcher shall put a day-long effort to plan journey towards cyber defense corridor. Project Aarabh aims at beginning of new era of cyber defense education in Jharkhand in order to promote cyber defense corridor and tap $5 billion in next 5 years. On this auspicious occasion, I welcome Dr. Sanjay Bhalji, Director General CERT, Dr. Amit Sharma ji, Advisor Cyber Ministry of Defense, Sri Rahul Purwar ji, Secretary Department of Higher and Technical Education, Sri Sasank Sekhar ji, Chairman Cyber Vidyapeeth Foundation, Dr. Amar Kumar Chaudhary, Registrar JUT, and Sri Balaji Venkateswar, Cyber Defense Researcher, Cyber Vidyapeeth Foundation, and all VCs and Registrar and my colleagues present here, and press and media. Thank you all. साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग करने का ये समय बहुत धन्यवाद करती हूँ आचार्य विजय पांडे सर को. Ladies and gentlemen, as we all know, cyber defense is a computer network defense mechanism which includes response to actions and critical infrastructure protection. साइबर सुरक्षा आज की वैश्विक ज़रूरत है. साइबर डिफेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी तैयार करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस दिशा में ईमानदार प्रयास हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं. झारखंड में साइबर डिफेंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के मद्देनज़र आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, जिसमें अपने विचारों को रखने के लिए और विज़न स्टेटमेंट के लिए मैं सेक्रेटरी सर को इनवाइट करूँ. इससे पहले इनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहती हूँ. श्री राहुल पुरवार इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ 1999 बैच. In this last 23 years of cherished career, he has been Chief Electoral Officer, MD, Jharkhand Bijli Vitran Nigam, Executive Head, District Administration, and his current role, he is Secretary, Department of Higher and Technical Education. He is an academician and always continues to his academic pursuit. He is BTech from BHU IIT, MTech from IIT Delhi, Executive Postgraduate Diploma in Management
from IIM Ranchi and Master of Public Policy from Harris School of Public Policy, University of Chicago. मैं बहुत सम्मान के साथ आग्रह करना चाहती हूँ सेक्रेटरी हाई एंड टेक्निकल एजुकेशन श्री राहुल पुरवार सर से विजन स्टेटमेंट के लिए, आपके विचारों के लिए। सर प्लीज। थैंक यू। आज की इस डे लॉन्ग वर्कशॉप प्रोजेक्ट आरब पर उपस्थित डॉक्टर संजय बहल जी, डायरेक्टर जनरल सर्टिन, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर अमित शर्मा जी, डायरेक्टर एंड एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन के चेयरमैन श्री शशांक गौरियाल जी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वीसी आचार्य विजय पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित श्री बालाजी। झारखंड में इस आयोजित वर्कशॉप में विभिन्न क्षेत्रों इंक्लूडिंग एकेडमिशिया एंड इंडस्ट्रीज़ के हमारे सभी वॉलंटरी पार्टिसिपेंट्स, मीडिया पर्सन्स, फ्रेंड्स, आज झारखंड के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। एक हम नए कार्यक्रम की, एक नई सोच की का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि इस वर्कशॉप के नाम से ही विदित है, प्रोजेक्ट आरब, गुड बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। तो हम सब लोगों का आज उम्मीद है इस वर्कशॉप से कि जो नया कुछ है, आज कुछ नया कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सब लोग एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक अपनी काबिलियत को, अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि झारखंड को साइबर डिफेंस में किस तरह से एक मजबूत राज्य के रूप में हम पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने परिमार्जित कर सके। यही आज हम सबकी एक भावना है। आज की वर्कशॉप में की शुरुआत करने से पहले, आज मैं अपने नोट में पहले मैं कुछ अच्छे तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसको भी रखने की कोशिश करूंगा। और आज की वर्कशॉप में पूरे दिन में कैसे हम लोग को अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, उसके बारे में कुछ बातों को मैं इंगित करूंगा। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही इंडोनेशिया की बाली में G20 की समिट हुई थी। उसमें जो महत्वपूर्ण बात उभर करके आई थी, कैसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू समाज में बदलाव लाएं, इस पर विशेष जोर दिया गया था। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा जब हम अपने डेटा को का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकें। आज का जो न्यू इरा का स्लोगन है डेटा फॉर डेवलपमेंट, इस पर कैसे हम एक मजबूत तरीके से फोकस कर सकें ताकि हमारे समाज की, हमारे रीजन की जो पावर्टी है, गरीबी है, उसको हम रोकथाम कर सकें। जो सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं उस पर हम लोग फोकस कर सकें। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय चल रहा है क्लाइमेट चेंज, उस पर कैसे हम अपने आप को एक मजबूत तरीके से हम डेटा के माध्यम से हम उसमें परिवर्तन ला सकें। ये सारी चीज़ें इस वर्कशॉप का, इस समिट का जो मुख्य उद्देश्य था। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा डेटा एक्यूरेट हो, जब हमारा डेटा इंक्लूसिव हो, जब हमारा डेटा वाइड स्प्रेड हो। जब तीनों चीज़ें मिल कर के हमारा डेटा बनेगा तभी उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता, उसका यूज़ समझ में आएगा। अभी मैं कुछ दिन पहले 2 साल के एक प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में था, हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कैसे हम एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करें। एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी कैसे बनेगी जब हमारे पास में डेटा एक्यूरेट होगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि वेस्ट ने जो इंडिया के बारे में एनालिसिस की है उससे आप सहमत नहीं होते, एग्री नहीं होते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो उनकी एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न
एनालिटिक्स टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, बट हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं होने की वजह से जो हमारे पास पहुंचता है उनके तक पहुंचता है, उसकी वजह से हमारी एनालिसिस भी एक्यूरेट नहीं आ पाती है। तो इसलिए डेटा का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी एजेंसियां इसमें काम करती हैं, और आज जब हम डेटा की बात करते हैं तो इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम डेटा का एक्यूरेसी पर ध्यान दें, उसका करेक्ट डेटा का निर्माण करें, ताकि हमारी एनालिसिस जो एनालिटिक्स है वो भी हमारी करेक्ट होगी। दूसरी बात करते हैं इंक्लूसिव की बात करते हैं कि अभी भी आज हमारे देश में काफ़ी लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर हैं, डिजिटल माध्यमों से काफ़ी दूर हैं, तो उनको भी हमें शामिल करना होगा। ये एक हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मिशन में हम लोग जोड़ सकें। और थर्ड है कि कितना हम फैला सकें अपनी चीज़ों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और कम सीमित रहने से इसके बहुत सारे दोष अभी आए हैं जिसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा। तो इसको वाइड स्प्रेड भी डेटा का होना चाहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर कर सकें और उनकी इसी के हिसाब से हम इसकी प्लानिंग कर सकें। अभी आपने देखा होगा डेटा का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कुछ नए हम लोगों ने काम किए हैं पिछले विगत वर्षों में। आप देख सकते हैं कोविड के समय में जो चीज़ हम लोग सोच नहीं रहे थे कि हम लोग डिजिटल माध्यम से कितना परिवर्तन ला सकते हैं, और हम लोगों ने रिमोट वर्किंग करके दिखाया, हम लोगों ने ग्रीन ऑफिसेस बिल्डअप करके दिखाए, कैसे हम अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को, अपने समाज को एक ग्रीन स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, जो हम लोगों ने देखा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कि आज जो हमारा इंडिया की खासतौर से बात करेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में जो रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस टोटल ट्रांजेक्शन का 40% हमारे इंडिया के यूपीआई सिस्टम से हो रहा है। वर्ल्ड का टोटल रियल टाइम पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका 40% इंडिया के यूपीआई सिस्टम से हो रहा है, यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम से हो रहा है, इंटरफेस सिस्टम से हो रहा है। दूसरी बात करें, यदि हम बात करें इंडिया में ही हम लोगों ने 460 मिलियन जो न्यू बैंक अकाउंट्स खोले हैं वो डिजिटल आइडेंटिटी के माध्यम से खोले हैं। और हम बात करें कि जो अभी हम लोगों ने कोविड के बाद में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी, जिसके लिए हम लोगों ने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था, दैट वाज द कोविन, एंड उसके थ्रू हमने सक्सेसफुली इतने वर्ल्ड के लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये हम लोगों ने बहुत एक सुनहरे पल को देखा है कि कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से हम लोग समाज में कितने बदलाव ला सकते हैं। और न सिर्फ हम अपने जो कन्वेंशनल तरीके हैं पॉवर्टी एलिवेशन के या सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस के या क्लाइमेट चेंज के, इसके अलावा डेटा हमको कोई भी इवेंचुअलिटी के केस में, कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट के केस में कैसे हमको रिएक्ट करना है, हमारे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को, हमारी जो एक स्पीडी मैकेनिज्म होना चाहिए किसी सिचुएशन में, कोविड आया कैसे में रिएक्ट करना है, ये हमारे पास में डेटा एक्यूरेट होगा, डेटा हमारे पास इंक्लूसिव होगा, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बेहतर ढंग से उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं सिचुएशन को। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट कि सपोज़ हमारे डेटा में प्रॉब्लम्स हैं, डेटा हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने देखा होगा 2019 में टोटल करीब अराउंड 7.9 बिलियन रिकॉर्ड्स केसेस आए थे जिसमें डेटा को ब्रीच किया गया था, और उसके थ्रू जो लॉस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, उसके कई कारण हो सकते हैं कि लोग जल्दी से जल्दी फिनेंशियल गेन लेना चाहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली एडवांटेज लेने के लिए डेटा का मिसयूज़ करते हैं, या पूरे समाज में एक भय का वातावरण, फियर क्रिएट करने के लिए हम डेटा का मिसयूज़ करते हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात किया जाए तो बिजनेस एडवांटेज लेने के लिए हम डेटा का मिसयूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखा था। अभी जो करंट में रशिया यूक्रेन वार हो रहा है उसमें साइबर अटैक्स को बहुत ही क्लोजली देखा गया है, और उसका ये नहीं कि आज हो गया हो, वो 2013 के बाद से ये कंटिन्यूस चला रहा था, और 2017 में हम लोगों ने जो सबसे एक सीवियर तरीके से देखा था जब नॉट पेटिया मेलवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को लीक किया गया था, और उसमें पूरे वर्ल्ड को करीब $10 बिलियन का ग्लोबल डैमेज हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो हमारे थ्रेट्स हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम, साइबर अटैक, साइबर टेररिज्म की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फोकस है जो हमारे लिए हमें एक चुनौती दे रहा है आज के समय में, चैलेंजेस हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि कैसे हमें इस पर वर्क करना है। तो सबसे एक मैं आपके सामने एक अभी मैं बात कर रहा था कि एक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये साइबर सिक्योरिटीज़ हाउ सो इम्पॉर्टेंट। आई मीन आप ये देखेंगे झारखंड की हिस्ट्री में देखे आएंगे, मैं जामताड़ा से सभी लोग वाकिफ़ होंगे,
तो जब मैं 2002-03 के आसपास में देवघर में था, देवघर में एज ए डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर काम कर रहा था, तो उस समय वहाँ पर चोरी की खबरें बहुत आती थी कि चूँकि देवघर जो है जामताड़ा के बॉर्डर में आता है, और वहाँ से कि आपका रनिंग कंडक्टर जो बिजली के तार जाते हैं और रनिंग कंडक्टर होते हैं, दे हैव एक्सपर्टीज़ कि वो रनिंग कंडक्टर को काट लेते हैं, और चोरी करने के बहुत सारे केसेस आते थे। फिर कुछ समय बाद देखा कि वो रनिंग ट्रेन में इलीगल गुड्स का कैसे लोड अनलोडिंग कर लेते थे। तो ये एक्सपर्टीज़ दे हैव सम एक ग्रुप ऑफ द पीपल दे हैव दिस काइंड ऑफ ए पिक्यूलियर स्किल द एक्सपर्टीज़। और सडनली देखा गया उसी एरिया से जब साइबर की बात आई, डेटा की बात आई, डिजिटल वर्ल्ड की बात शुरुआत हुई, तो साइबर क्राइम में भी वो एरिया सबसे ज़्यादा हेड में कर रहा है। और अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ समय पहले तक कि 50% जो टोटल साइबर क्राइम हो रहे हैं कंट्री में, दैट इज़ ओनली फ्रॉम दैट रीजन ओनली, उस रीजन से। तो सोचने वाली बात है कि जिस रीजन के लोग अनएजुकेटेड है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो रीजन इतना बैकवर्ड है, जो रीजन इतना अनडेवलप्ड है, फिर कैसे ये सब चीज़ें वहाँ पर साइबर क्राइम वहाँ पे हो रहा है। एक एनालिसिस का विषय है, सोचने की बात है कि कैसे हो रहा है वहाँ पर, कैसे इन लोगों को रोका जाए इस कामों से, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे उनका रिहेबिलिटेशन कराया जाए। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है, हम सबके सामने एक चैलेंज है, कैसे इस चीज़ को हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। और इसका एक जो महत्वपूर्ण जो हमारे सामने अभी प्रस्तुत कर रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे सामने, कि हम लोग इस तरह की सिचुएशन की पूरी तरह से तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू टैकल सच काइंड ऑफ ए क्राइम्स। दूसरी बात आ रही है कि ये नॉट ओनली एक साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम हो रहा है, बट पूरे ओवरऑल रीजन में एक सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि पूरे रीजन को, पूरे कंट्री को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। इसके थ्रू हम लोग आज के समय में जितने हमारे पावर स्टेशंस हैं, उस पर हम लोग साइबर अटैक का सूचनाएं मिल रही हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी है कि फिनेंशियल इंस्टॉलेशन में जामताड़ा का मेजर केस है कि बैंकिंग सेक्टर से, एंड यहाँ पर स्टेट बैंक के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर्स को मोस्टली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि हमने डिजिटल सोल्यूशन को इशू नहीं बनाया है, लिमिटेड वे में उन तक पहुंच रही हैं चीज़ें। तो कैसे इमीडिएट फिनेंशियल गेन करने के लिए क्या रास्ते अपनाए जाएं, इसी वजह से लोग इस तरह के सेक्टर्स में आ रहे हैं और इस तरह के क्राइम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी सेड कि डेटा शुड बी एक्यूरेट, इंक्लूसिव एज वेल एज वाइड स्प्रेड। यदि ये नहीं होगा तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने समय समय पर आते रहेंगे। और इसके लिए है कि हम लोग को डेटा हमारा लीक नहीं हो सके। डेटा लीकेज से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो नुकसान हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि डेटा हमारा लीक हो जा रहा है और लोगों की प्राइवेसी भी इफेक्ट हो रही है। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो पर्सनल डेटा रहता है, सपोज़ आप जा रहे हैं कि किसी, आपको अपना मोबाइल का सिम कार्ड ही लेना होता है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होता है। तो क्या होता है, आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं, तो हो सकता है फोटो कॉपी वाला एक कॉपी रख के अपने पास रख लेता है, बाद में वो लोकल जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं उनको वो बेच दे, इस तरह के सप्लाई करते हैं। इज़ अ काइंड ऑफ लीकेज ऑफ डेटा, और ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकता है। तो इस बात का एक हम लोग के सामने की चैलेंज के रूप में आया हुआ है कि इसके हम लोग कैसे इसको हम लोग फेस करें और जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग 4 पॉइंट पर हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। 1 इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन, 2nd इज़ अबाउट द अवेयरनेस, 3rd इज़ अबाउट द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, 4th इज़ रेडीनेस एंड कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट। यदि हम 4 पॉइंट पर फोकस करें, उसके लिए अलग अलग तरीके से हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं। ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन हमको एक कंसोलिडेटेड, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि हम सब चीज़ों पे निजात पा सकें। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, दिस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, और ये पब्लिक कमेंट्स के लिए आया है सबके सामने कि जो बिल रखा गया है कि इसमें अपने सजेशन दें, अपने दें। तो इसका हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि कैसे हम अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए जो लॉ बनाया जा रहा है उस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो सिमिलरली वी नीड टू क्रिएट मोर ड्राइव ऑन दिस सेक्शन। ना सिर्फ सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं, हमें भी विजिलेंट होने की ज़रूरत है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं, काम कभी कभी अनवांटेड तरीके से भी शेयर कर देते हैं, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हम चूँकि डिजिटल डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, तो कभी कभी इसका हम अपने खुद डेटा को लीक कर देते हैं। तो दिस इज़ अ डेटा प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द होल ड्राइव।
if we talk about the awareness, this is very important, and why we are sitting here, just for one of the component is awareness. कैसे हमें जो मेजर हमारे जो साइबर लॉज हैं, साइबर इश्यूज हैं, उसके बारे में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें. और इसके लिए ये नहीं है कि एक बार हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो आप परफेक्ट हो गए, नहीं. सस्टेन्ड अवेयरनेस ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे लगातार हम इन्फॉर्मेशन दें. अभी मैं अपने बेटी के कल्चर प्रोग्राम में एनुअल फंक्शन में DPS गया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले ही गया था. तो वहाँ पे बच्चों ने बड़ा अच्छा स्किट प्ले किया. उसमें यही है कि एज ए पेरेंट्स हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि बच्चे लोग मोबाइल डिवाइसेस से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, कि हाउ सम टाइम दे लैंड अप इन सम प्रॉब्लम्स. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ना सिर्फ खुद अवेयर हों, बल्कि अपने फैमिली में, अपने आसपास सब जगह इस अवेयरनेस को हम लोग पहुँचाएँ. और अभी हम लोगों ने काफ़ी ग्रुप्स भी तैयार हो रहे हैं जो साइबर हाइजीन पर फोकस कर रहे हैं. तो उनके थ्रू भी हम उस मैसेज को समाज में पास ऑन करें, ताकि हम कोशिश कर सकें. अभी UGC की तरफ से भी सिलेबस तैयार किया गया है, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज पर तैयार किया जा रहा है. तो मैं चाहता हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ से, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस कोर्सेज को हम लोग अडॉप्ट करें और अपने अपने करिकुलम में 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर प्रोग्राम, वॉट एवर द कैपेसिटी में कैसे हम इसको इस इंफॉर्मेशन को साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करें. यही आज हमारी वर्कशॉप को उद्देश्य, कैसे हमें साइबर सिक्योरिटी पर्सनल्स डेवलप करने हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द होल अफेयर की वर्कशॉप, कि हम लोग इसको इंश्योर करें, सभी लोग इमीडिएटली इसको अडॉप्ट करें और अपने आगे वाले प्रोग्राम से में इसको सम्मिलित करें. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ काइंड ऑफ असेसमेंट. कभी कभी हम लोग सिचुएशन को असेस नहीं ठीक से करते हैं. एज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी का असेसमेंट करना है, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कि समटाइम वी फील कि नहीं हमने हमारा जो सॉफ्टवेयर, हमारा सिस्टम इज़ परफेक्टली सिक्योर. नो, बट स्टिल वी नीड टू हैव ए कॉन्स्टेंट ड्राइव, सस्टेन्ड ड्राइव, कि हम अपने सिस्टम को सिक्योरिटी असेसमेंट हम हमेशा करते रहें, या इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करवाएं या क्रॉस वैलिडेशन करवाएं. वी कैन अडॉप्ट मेनी स्ट्रेटजी, बट वी नीड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट कि हमने जो बनाया है वो परफेक्ट है. ये बिकॉज समाज में, सोसाइटी में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इतना जल्दी बदलाव आ रहा है, तो इसके लिए हमेशा कांस्टेंट विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, ताकि हमने अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक कर रहे हैं. और ये भी चेक करना है कि थ्रू स्ट्रेस टेस्ट कि हमारा सिस्टम कितना वल्नरेबल है, कि सपोज किसी तरह का होता है साइबर अटैक, तो हाउ वी कैन सेफ गार्ड अवर सिस्टम और होल प्लेटफॉर्म. That is kind of vulnerability mapping, vulnerability assessment to be done. So assessment is very important, and for whole thing we require a cyber security personnel. That is very important. So trained manpower is very important, which we can create through imparting education with our different courses, programs, etc. Next is जो सबसे important है, our readiness and capability enhancement. How much ready we are. कभी सिचुएशन क्रॉप अप हुई तो कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है, दैट टू बी डन. एंड दिस इज़ नॉट काइंड कि हमें आज बैठे और हम अपने आप को रेडी कर लेंगे, नहीं. दिस रिक्वायर काइंड ऑफ अ ग्रेट टीम वर्क. वी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, वी रिक्वायर एक्सपर्टीज फॉर दैट, फॉर इंश्योरिंग रेडीनेस फॉर दिस any kind of a cyber security lapses, maybe in terms of cyber attack, cyber fraud, anything. We need how we can prepare ourselves. That is only by putting some expertise on the system, putting some continuous sustained investment on the system, then only we can ensure. We need to prepare a kind of ecosystem जहाँ पर ना सिर्फ government agencies, education institutions, industry partners, different stakeholders को एक साथ आना पड़ेगा. एक हम लोग को एक complete cyber एक ecosystem बनाने की ज़रूरत है. उसके थ्रू हम सिचुएशन का टाइमली असेसमेंट करें, उसको देखें, चेक करें कैसे हो सकता है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, स्ट्रेटजीज बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें. और सिमिलरली वी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट फॉर दैट, एंड इसके लिए हमें लोगों को तैयार भी करना है, हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रोबस्ट बनाना है, अपने सिस्टम में जो बदलाव लाना है वो भी करना है, हमें कॉन्करेंट ऑडिट कराना है, सिक्योरिटी ऑडिट कराना है, ताकि हम चीज़ों को अपने सिस्टम्स को हम लोग हमेशा सेफ रख सकें. दैट वी नीड टू इंश्योर. इसके लिए सभी लोगों को आज वर्कशॉप का यही उद्देश्य था कि कैसे हम सब लोग एक साथ आ सकें. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHA ने भी एक ड्राइव स्टार्ट की है, दैट इज़ I4C, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर.
that is for ensuring coordination as well as capability enhancement mechanism. So ये सिर्फ एक सेंटर्स काफ़ी नहीं होगा, इसको हर लेवल पर इसको हम लोग को ये कोऑर्डिनेशन और कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम को चलाना होगा, ताकि जो इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं सबके साथ मिल करके गवर्नमेंट एजेंसीज़, साइबर पर्सनल्स, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ों के बारे में, बिकॉज अल्टीमेटली यदि कोई क्राइम होता है तो उसके बाद कैसे हमें एक्ट करना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी पूरी तरह से उनका भी हम लोग को उनको भी साथ ये इस इकोसिस्टम का पार्ट होगा, फ्रेमवर्क का पार्ट होगा, ताकि उनके साथ भी सभी चीज़ों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं समाज के, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म में ला करके हम उनको लीगली अवेयर कर सकें, उनको हम लोग कैपेबिलिटी उनकी इन्हांस कर सकें और एक साथ हम लोग आगे बढ़ सकें. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस होल अफेयर. आई होप कि इस वर्कशॉप में हम सब लोग ये नहीं है कि सिर्फ हम ही यहाँ पे कह रहे हैं, आप लोगों के जो भी सुझाव हैं, आप लोगों ने जो आपके एक्सपीरियंस है आपके विद द एकेडमिक एनवायरनमेंट और विद द इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, या आपके समाज में रहने से जो भी आपके जो व्यूज़ हैं, मैं चाहूँगा उसको भी आप मेल के थ्रू, मैं आई विल रिक्वेस्ट द साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन की एक सिस्टम बना दें, ताकि लोग अपने सजेशन भी दे सकें हमारे सामने, और सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके एक हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें. मैं आप सब लोग से उम्मीद करूँगा, दिस इज़ नॉट ए वन वे अफेयर. वी नीड टू कंसोलिडेट अवर सेल्फ. वी नीड टू मेक ए काइंड ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पे हम सब लोग मिल करके अपनी भावना को शेयर करके एक नई कार्य योजना तैयार करेंगे. इसी उम्मीद विश्वास के लिए मैं फिर से एक बार साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत जल्द समय में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके और आप सभी लोग के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को, इस वर्कशॉप को आयोजित कराया. आई एम वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टर जनरल सर्टेन और डायरेक्टर डिफेंस का, कि ये लोग आए दिल्ली से आकर के अपनी भावना को संप्रेषित करेंगे और हमें मदद करेंगे कि कैसे हम लोग झारखंड के लिए ये जो हम लोगों ने सपना देखा है, जो हम लोग ड्रीम बनाने जा रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, और ड्रीम को कैसे साकार कर सकते हैं, उसमें उन सब की बहुत ही एक्सपर्ट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इसी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और उम्मीद करूँगा यहाँ से, इस वर्कशॉप से कुछ नया सीख करके जाएंगे, कुछ नया लेकर के जाएंगे, ताकि आने वाले भविष्य में एक हम ऐसी योजना तैयार कर सकें कि झारखंड में जो जामताड़ा को लेकर के एक हम लोग के साथ में ब्लैक स्पॉट है, उसको हम एक गोल्डन स्पॉट में कन्वर्ट कर सकें. ना सिर्फ जामताड़ा को, बल्कि पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे विश्व में एक हम अपनी पहचान बना सके. इसी उम्मीद विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. जय झारखंड, जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सेक्रेटरी सरकार श्री राहुल पुरवार सर का. सेंसिटिव डाटा का प्रोटेक्शन करना, साइबर इश्यूज़ पर लोगों के बीच जागरूकता लाना, साइबर इकोसिस्टम डेवलप करना, ये मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमें मिलकर साझा प्रयास करने होंगे. एक बार पुनः धन्यवाद सेक्रेटरी सर का. साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड को साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में प्रमोट करने के साथ ही कुछ गोल भी रखे गए हैं जिन्हें अचीव करने की ज़रूरत है. लाइक क्रिएट 1 million साइबर डिफेंस इंजीनियर्स इन द नेक्स्ट 10 years, derive FDI investment of $5 billion in the next 5 years, and develop cyber security technology park. और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें, जैसा कि सर ने बताया, राहुल सर ने, कि हमें विशेषज्ञों की राय की ज़रूरत होगी, उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी. ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ऐसे ही एक विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, डॉक्टर अमित शर्मा जी. उन्हें आमंत्रित करने के पहले आइए मैं संक्षेप में उनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ. Dr. Amit Sharma is currently serving as advisor, Cyber and Defense in the Office of the Secretary, Department of Defense, for his contribution to the field of cyber security, cyber warfare, and the development of a strategic cyber system. He has been awarded numerous awards. A special award for strategic contribution in 2013 by Honorable Raksha Mantri ji. Agni Award for Self-Reliance by Honorable Raksha Mantri ji in the year 2020, and is the youngest recipient of ever awarded this award. He has recently been awarded S&T Coin by Advisor S&T US Pacific Command, and most recently the CMAI's International Cybersecurity Award in 2022. डॉक्टर अमित शर्मा एक अच्छे राइटर भी रहे हैं.
He has written monographs and chapters in various books, namely NATO published The Virtual Battlefield, Perspectives of Cyber Warfare, IDSA published Security Cyberspace, International and Asian Perspective, IDS published India's Cybersecurity Challenges, etc. So, now I would like to request Dr. Amit Sharma ji to kindly address this August gathering. Good morning. Dignitaries on the dais, off the dais, dear friends, ladies and gentlemen. One of the important aspect, when we had this discussion with Balaji regarding this workshop, the first thing that came to my mind was that what exactly you have in mind. That was the starting question that I asked him, that what exactly he had in mind. And the fundamental thing that he told was that we need to create a capacity, we need to create and to bring Jharkhand at an international podium where Jharkhand becomes as one of the prime centers for cyber defense. And of course, when you become a prime center for cyber defense, there are a lot of paraphernalial things that are associated with it. Of course, it starts with driving a lot of employment. It starts with driving a lot of economy boosting in terms of revenue generation. At the same time, most important aspect is capacity and skill enhancement of the local youth, as well as providing support and law enforcement to the law enforcement entities, so as to ensure that appropriate security paraphernalias are well supported with. Now, when you talk about this, and I'll be honest with you, it's not a dream or something, it is workable. Let me give you a small example. Israel right now, we consider as one of the most prominent in terms of cybersecurity, and that's what a lot of people talk about. If you go to one of their main cyber research centers, and that is, it's almost like a technology park where you have best of the companies that are located over there, and these companies are from all the major fields. 10 years down the line, it was just a desert. That desert was called as Negev Desert. If you go 10 to 15 years, 2 decades back, it was just a desert. And that's the fundamental aspect. Because what that desert has been transformed into is something revolutionary. That particular desert is right now driving the prime economy globally in terms of cyber. The key aspect to understand from this example is not the fact that Israel is the toppest country in terms of cyber. It's not the fact that they have developed so much. The important thing is, from a desert to a leader in cybersecurity and cyber defense. That's the fundamental thing that we need to look into. So let's understand how they did it. It's always many times during my masters in UK, and we had a lot of interactions with various profs, and they always used to tell, and that is something very phenomenal when you understand those things. We need to always understand from what has happened in the past. Typically in the academic space, you always do a literature survey. Whenever you start a research activity, the first part is literature survey. So if you are going into this endeavor, the first thing is you need to do the literature survey in this particular area. So what is the literature survey? How did this started? Look at the best examples in the world. The other best example is California. It's this Bay Area, which is again, and you can ask Balaji, what was Bay Area 2 decades back? I'm talking about 2000, and that's what it was. Nothing. And right now, the world's cyber economy is driven by this in US. That's the fundamental thing. So what exactly they did? They did on certain aspects beautifully well. And my suggestion, and that's just a submission to all of you, that if we are embarking on this
long-lasting vision of actually can we create Jharkhand to the level that where Israel or where US is standing. You know, they were exactly in the same state. In fact, I'll be honest with you, Jharkhand is still better in certain scenarios. You know, the kind of infrastructure and everything, it was nothing over there 20 years back. But then how exactly it transformed, that's the fundamental example we need to understand. And if we understand that example, we'll be able to, I would not say replicate that, but yes, we can understand their challenges, we can understand the actions that were taken, and at the same time, repurpose those actions, repurpose those ways and means specifically to suit Indian scenario, specifically to suit the regional scenario. To give you a small example about these aspects, and they were very fundamental things about it. As I started off my talk with regard to, you know, the goals. The first was revenue. The second was capacity building. The third was local ecosystem, and then subsequently, you know, support to the law enforcement. So that's how we moved it out. They also worked it out primarily the same way. But to address these goals, how they did it, the fundamental thing was education system. They changed the education system. Pardon me for what I am about to say, because in an education institute saying the same thing, I don't know whether how it would be received. But if you see, it's not the fact that India is not producing a lot of engineers and so on. But speak to any industry professional, the first thing they will say that most of them are unemployable. We have created our curriculums, which are dating back to almost 1 decade, almost 10 years back. I still, you know, many times I interact with people and I still ask, is William Stallings the same book abhi bhi wahi padhai ja rahi hai, Tenenbaum engineering colleges mein wahi padhai ja rahi hai? And trust me, the answer is still the same. So have we changed our education system, the way in which we impart our education system, and the way in which this education system is required in the current day aspect with regard to employability? That is a question I leave to you. I don't have an answer to it, but I leave that question to you. The fundamental aspects, and we'll first talk about education, and then I'll talk about the revenue part, then I'll talk about the other aspects in terms of employability and you know, capability creation. That's because the word capability creation is a very larger word. But when you have to understand, there is a saying in defense that, you know, if you ask a drill sergeant, how do you eat an elephant? Question पूछा जाता है, हाथी कैसे खा सकते हो आप? So it's very simple, you know, you take a fork and knife, slice it into pieces, and then take it step by step. So the same way, if you have a very big challenge, a very big vision to create this particular, so you need to slice it down into granularities, you need to create the foundational principles, and once you create these foundational principles, let all these principles parallelly go. And that is exactly the same what happened in Israel, that is exactly the same what happened in US, in most of the countries. And interestingly, you know, as we speak, in last 10 years, the new hub that is coming up is UK. UK was always, you know, a financial hub. It was never a cybersecurity hub. But in last 5 to 10 years, they have repurposed exactly into the same economy. UAE, exactly the same model. It's exactly the same model. So let's come to first foundational pillar. That is the education part. So what exactly is missing? It's not the fact that fundamentals are not required. Yes, they are required. But are these fundamentals imparted in the way that they are more example oriented or they are more industry oriented? That is a question we need to ask. You'll be amazed, you know, if you talk to any of the cybersecurity professional, the best cybersecurity professionals, we use assembly language. We use C, C++, fundamental languages. Assembly languages, C, C++. And at the same time, system programming. I'm pretty sure, you know, most of the times whenever I interact with a lot of youth and in spite of the whatever maybe the time commitments and so on, I always like to interact with young guys because it gives you a lot of perspective about the society when you talk and interact with young people.
the focus has changed. For them, the easier option is let's go for scripting, let's go for short-term course on AI and all that, and let's, do something which is quick, quick made results and so on. Nobody wants to go into the, the difficult part of things, the system programming, fundamentals, compiler design, fundamentals, assembly language, fundamentals. You please ask best of the security solution makers in the world. Assembly language is the best way to counter any cyber attack, and vice versa also, assembly language. And I don't want an answer from any of you. You are all very senior teachers, guru hai aap sab. So please think over it, how much time we devote to fundamentals of assembly language. Other than a short semester, that also, most of the people tend to neglect many a times. And to build cybersecurity, the fundamental thing is assembly language. The fundamental thing is system programming. We have just, I still remember there was a book called as Donovan in system programming. But now I interact with, many of the guys and many of the people, still they are going into the same. So when I ask them that whole of the kernel interfaces, whole of the system interfaces, whole of the, the way in which fundamentals of the operating systems work, they have changed. So has it been evolved? So my first and the foremost recommendation, and it's pure suggestion to all of you, is that look into the fact that if we have to create this kind of an ecosystem, this cyber corridor, the first thing you would require is manpower. You can't, any of the company, any of the global investment, if it has to happen, it cannot happen until and unless you have a local ambient manpower, local ambient employable manpower. You can't expect, somebody who's living in, let's say, Tamil Nadu to come all the way to Ranchi to work in a company over here. It doesn't work. The mechanics don't work. But yes, the local youth, that is Jharkhand, Bihar, the regional areas, that's the area you have to cater for. If you create, and it's not the fact that Jharkhand doesn't create engineers, but how to create them in such a way that they are employable, their courses are changed. That's a suggestion I leave to the Department of Higher Education, and probably, fundamentally these courses need to be evolved. Second aspect in this education system itself, whether we like it or not, India change, sometimes, bringing change is a very difficult aspect. Because in order to bring change, people need to move out of the comfort zone. Many times in order to impart that training also, you need to go out of your comfort zone. The first thing is train the trainers. So if you have to, in the regular, I don't suggest you to create out a separate BTech program or something of that sort. Although if it can be created, it's always easier to start afresh with a clean slate. But my suggestion would be repurpose your existing BTech programs so that most of these youth are employable. And trust me, leave alone, Jharkhand to be, Jharkhand would be the capital for best skilled personnel in cybersecurity or computers that can, feed in any of the best industry, not just in India, but globally. So the first thing is, let's change the curriculum. Let's change the curriculum. Let's bring in more advances specifically in everything. It's not the fact that assembly language or computer architecture is not the subject, but has it been updated? Has it been changed? So that's the fundamentals we need to look for. The second aspect is, this is at the fundamental level, the graduation level. We need to go for specializations, advanced specializations. And these advanced specializations, because whenever you have to create a house, आप घर में जब नींव रखते हैं, सबसे पहले अपनी नींव स्ट्रांग रखते हैं. आपका घर बहुत खूबसूरत अगर हो भी जाए, but till the time its foundations are not right, उस घर का कोई फायदा नहीं होता, because कभी ना कभी एक झटके से ही आकर वो गिर जाता है. So the foundation part, the engineering degree needs to be repurposed. The second aspect you need to look into is advanced specialization, employability. How do you increase employability? Institutions, again, academic institutions, there is a lot of responsibility onto them. Please integrate industry along with yourself. Have 6 months orientation program or an internship program where industry, your children
are going into the industry experts are entering into, giving you specialized talks. Please work into that. Because that 6 months is fundamentally something that would alter their way. It will make them, industry ready. So that's another aspect and a request to all of you. The third thing in this particular pillar is create new specialized modules which are specifically to target cybersecurity. Why cybersecurity? Because cybersecurity is a niche area, and that is what will create that particular huge manpower, which would subsequently fulfill the need for manpower over here. Second aspect to this vision, the first one is education, the second is infrastructure. Now, if you look at the example with Israel, the Negev desert, the first thing they did was they revolutionized the infrastructure. The internet speeds were revolutionized. You require a very high bandwidth. You require, next generation, lighting and everything. It's not the fact that no industry would work at a place where you don't have 24/7 uninterrupted power supply. And that power supply needs to be economically viable. Because if I am running a data center in a state like Jharkhand, I would prefer that would be cheaper, because industry works on a fundamental principle of return on investment. So infrastructure is the key. That's the second aspect we need to look into. How to work into the infrastructure creation for that particular things. And the third part is with regard to the policy aspects with regard to the state itself. Can in the initial, because I'm again giving the example of Negev Desert or probably the Bay Area and so on. Because there also, at the initial part, certain tax soaps, certain R&D, certain, subsidies were extended out. These things actually promoted for the industry ecosystem to come. It's not the fact that Bharat Sarkar ya fir Jharkhand Sarkar, let's say, they put down a couple of 1,000 crores or a couple of 100 crores into a program. Programs don't work like that. Create the field appropriate and automatically उस पे खेत खुद लग जाएगा. अगर आप खेत की अच्छे से जुताई कर लें, अच्छे से उस पे कर लें, then subsequently you just need to throw the seeds. Automatically the first crop will come. The moment that crop comes, एक बार अगर किसी किसान को वो क्रॉप का फसल आ जाती है, then it becomes a cyclic period. Then आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती. It elongates and it becomes a self-propelled system. So if you have to go for this mission, that is my few suggestions to you. Please find the fundamentals, draw the fundamentals roadmap very clear. And that would automatically drive. Foundations agar bahut अच्छे हैं, so rest of the building would work out pretty well. And I initially thought of giving you probably a talk on to cyber weapons and everything. But then I thought that the fundamental things, because when I heard the secretary speaking about the vision, and trust me, this is one of the very beautiful visions. If this works out, probably it would be one of its kind in India, and if not in Asia. Chinese are trying to do it, but the linguistic barrier and of course the trust barrier is actually drafting them. But if this vision is worked out here, trust me, this is going to be one of its kind if it fully operationalizes. But the key aspect is fundamentals need to be very perfect. And when it comes to cyber threat landscape, I always believe we typically, last couple of decades have seen a phenomenal growth in the way in which cyber threats have increased. And to be honest, threats such as ransomware or defacement and all that, we come from a background where for us more important things are with regard to cyber disruption systems, with regard to cyber weaponry. To give you a small example, the first example of an actual weapon system that targeted a cyber physical system was Stuxnet. Most of the people, Stuxnet was a weapon system that was deployed onto the Iranian nuclear reactor, the Natanz nuclear reactor, and the entire centrifuges were destroyed just by using a malware called as Stuxnet. It was beautifully written, If most of the people who would actually read it, who would actually analyze it, it's one of the best. But it's not the fact that Stuxnet was the only one. Then you had Indestroyer, you had the dark energy, the most recent, we talk about Ukraine, an example of a malware called as dark energy that was utilized where
allegedly Russians shut down the Ukrainian power grid using a malware called as dark energy. So that's the way in which cyber is evolving. It's no longer something that has only economical effect. Yes, Jamtara is a problem. I always considered, I'm very glad that one example was saying that by the secretary that when he was previously there as the DM, just adjacent to it, it's the intent. If you can understand, the same region initially started off with stealing out something on the trains, stealing off something on this, and then subsequently migrated onto the digital space. So essentially it's the thought process, and that thought process is repurposed. How that is to be done, it's a law enforcement as well as societal problem that fundamentally needs to be there. But I personally consider that financial crimes, and specifically these, are typically low in the effect aspect of it. Of course, ransomware, and just yesterday, last week we were talking, and we had CSDL incident, we had Tata Power, the ransomware attacks on Tata Power. But these are, again, as I said, ransomware hai kya? यहाँ पे local में फिरौती बोलते हैं ना, फिरौती. So that's, ransomware is fundamentally फिरौती. It's something. The only thing is that Firoti is being carried out by digital space. For example, most of the recent ransomwares like Lockbit 3.0 or Hive, one of the very recent, Hive and Lockbit, they are going on. In fact, just a week back, I was in Washington. We were at the CRI counter ransomware. It's a 37-nation initiative where we were discussing about this problem. But this problem is not just an Indian problem, it's a global problem. And the key part is the entire ecosystem. I would still consider the financial-based, cybersecurity aspects are lower in the stretch, But what is more coming, and that's what the future is, whether we like it or not, is cybersecurity in the cyber-physical domain. The cyber physical systems, and that's something we are not even looking at. Stuxnet, Indestroyer, Triconox, dark energy, black energy, all these, I'm giving you fundamental examples where electricity have been shut down, nuclear reactors, centrifuge plants have been destroyed, industrial control systems have been targeted. This is not something which is hypothetical. All this is an example. The only thing is most of us do not even care about it, or we don't read it in the open newspaper, but that's the future. And whether we like it or not, cyberspace, it's an artificial space created by humans, and trust me, we are not gods, so we always create something which is flawed. And whenever we create something which is flawed, it always create, the counter energies or the threats associated with it. So as the digitization space is growing, trust me, the next era is primarily gonna be cyberspace. And if the threats are increasing, so the countermeasures need to be deployed. And in order to deploy those countermeasures, creation of a cyber defense corridor is probably one of the very novel ideas that I've heard of. And if we could pull it off, trust me, this is gonna be the best, if not in the world, but it would be the best in Asia. Because that is something we need to harp on. But again, as I suggested, the fundamentals need to be very right. The foundational principles in terms of, the manpower from education, creation of, rechanging the education's resources, the manpower creation in terms of skilling them in the advanced way, and the infrastructure support, and then subsequently, rest of the things are ambient, it will come inside. Till the time we don't work out these things together, it's just a long way. But nevertheless, mushkil zarur hai, impossible nahi. So that would be my take on to it. Thank you very much. It was really a pleasure talking to you, and indeed, it's a beautiful dream, and I really wish it should be, and it will be, I'm pretty sure, under your guidance, it will be achieved. Thank you very much. Jai Hind. बहुत धन्यवाद करती हूँ. सही कहा सर ने, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. और कहते भी हैं कि हम चाहें तो ये ज़मीं हमारी होगी, धरती क्या आसमान में भी जीत हमारी होगी. डॉक्टर अमित शर्मा सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए.
झारखंड को साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बढ़ाना एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तो है, लेकिन जैसा अब तक बातें आई हैं, इस क्षेत्र में कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें समझना है, टेक्निकली उनका समाधान करना है, और इसके लिए बहुत एक्सपर्ट व्यूज़ की हमें ज़रूरत होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश में साइबर डिफेंस मैकेनिज़्म को डेवलप करने की दिशा में बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों में लगे रहने वाले डायरेक्टर जनरल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम डॉक्टर श्री संजय बहल सर की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। मैं आपको आपके विशिष्ट विचारों के लिए आमंत्रित करूं, इससे पहले एक संक्षिप्त परिचय आपका। डॉक्टर संजय बहल is currently with the Indian Computer Emergency Response Team and in faculty with IIT Delhi. He has been providing consultancy in the area of governance, risk, compliance, security, privacy, forensics, investigation, and fraud management to some national level projects in India. Prior to CERTN, he served Microsoft Corporation as Chief Security Officer, Tata Consultancy Services as Global CSO, Regional Manager for European Service Delivery and CMC Limited. Sanjay Bahal has been the winner of the prestigious and coveted Enterprise Risk Management Award for 2007. He was also the winner of the Microsoft Security Strategist Award 2007 in the ITers and Telecom category in India while at TCS. Sir, I would like to invite you for your important views. Dr. Sanjay Bahal, sir. Good morning. First of all, I would like to thank Jharkhand University of Technology and Cyber Vidyapeeth to have me here, and it's a pleasure seeing all of you here. I would like to thank Sri Rahul Purvarji, Secretary, Directorate of Higher and Technical Education, Dr. Amit Sharma, Advisor Cyber, Ministry of Defense, Sri Shashank, Director Cyber Vidyapeeth, Sri Vijay Pandey, Vice Chancellor, Sri Balaji, Cyber Vidyapeeth, Dr. Chaudhary, Dr. Mamta Verma, Director Cyber Vidyapeeth, for having me here, and all the ladies and gentlemen sitting here. I think the Master of Ceremony here has already covered a lot. On top of that, we have Secretary who's articulated everything, and after that, Mr. Amit Sharma. So I'm just wondering what I should be covering, because all of them have already given you so much of gyan. Having said that, let me say that cyberspace has become the 5th domain of concern after land, sea, air, and space from a national security viewpoint. Over the past few years, as digital revolution has taken the world and India by storm, smart devices and social media platforms proliferated, e-services became a way of life, and the world became prone to cyber threats and attacks. It is now increasingly being recognized that technological literacy is a prerequisite to compete and thrive in this domain of concern. And that technological literacy can only be brought about by all of you sitting here. The Government of India is committed to using the cyber and digital platforms to foster growth and empowerment of the people, and is committed to an open, interoperable, secure and reliable cyberspace, promote the internet as an engine for innovation, economic growth and trade and commerce, promote free flow of information including data, where Secretary has already mentioned that we need data which should be accurate, inclusive and widespread, promote cooperation between and among the private sector and government authorities on cybercrime and cyber security, and respect cultural and linguistic diversity.
It is this commitment that has been translated into the vision of Digital India. Digital India holds the potential to truly transform India from a developing into a developed economy. The Digital India program, with its focus on 3 key vision areas: infrastructure as a utility for every citizen, governance and services on demand, and digital empowerment of citizens, has the potential to provide an incremental 20 to 30% increase in India's GDP by 2025. The Digital India program is a step towards transforming the country into digital empowered knowledge economy and accomplishing an inclusive ecosystem wherein the services are delivered seamlessly and efficiently, while also ensuring safety and cybersecurity of transactions and operations. And as Secretary mentioned, 40% of digital transactions globally are now from India through UPI, and he gave very apt examples of COVID for data inclusivity. In case all of you had not put in the correct data for COVID, you would not have known which area is infected, which area should be avoided, etc. So, the accuracy of data in the CoWIN app was very, very crucial. India is one of the key leaders in the digital and knowledge-based economy with over 50% share in the outsourcing market. The world has learned to rely on Indian talent to develop transformational solutions. Today, India is also a leading hub for technology startups, and Indians are recognized for their entrepreneurial spirit globally. Cybersecurity is now at the top of the international agenda, as high-profile breaches have raised fears that cyber risk could endanger the global economy. Cyberspace is expected to be more complex in the foreseeable future, with many-fold increase in networks and devices connected to it, thereby making information and cybersecurity literacy a necessity. Today, there is a cybersecurity skill gap across industries, and India is no exception to this and is concentrating in building capabilities to have a safe and secure cyberspace. In order to develop capabilities in the country, the emphasis is on education, research, innovation, and productization in the field of cybersecurity. The Information Security Education and Awareness Program of the Ministry of Electronics and IT and the startup innovation is very crucial when it comes to the preparedness of the country for cybersecurity. Indian organizations are now focused on developing cybersecurity capabilities which are based on evolving technology areas such as Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, machine learning, and many more. Secure cyberspace is realized by 3 dimensions of information security, that is, people, process, and technology. In short, PPT. I'm sure all of you are very familiar with PPT. I'm not talking about the Microsoft PPTs. While various initiatives are being taken towards technology and setting up of policies and processes, it is seen that across industries, the skill gap, that is the pipeline of skilled people or the availability of highly trained and specialized defensive warriors, continues to widen. This technology security skills shortage is leaving all of us increasingly and alarming risk of cyber attacks. According to some recruitment managers, on an average, only 1 applicant out of 40, that is 2.5%, meets the strict criteria for an expert position in cybersecurity. Computer intrusions, cybercrime schemes, and covert misuse of digital infrastructure have bankrupted firms, destroyed billions of dollars in investment, and rendered millions jobless. While governments across the globe are grappling with the issue of unemployment or loss of employment, it is estimated by the Group of 20 economies that they have lost 2.5 million jobs in a wide range of nefarious cyber activities, including counterfeiting, piracy, and cybercrime. The damage from cyber attacks is expected to be
10.5 trillion annually by 2025, which is a 300% increase from 2015. Organizations have already spent over $150 billion in 2021 on cybersecurity, which is just 10% of the market. So the total opportunity in front of us is 1.5 to $2 trillion. ISC Square, in their report for 2022, have estimated the size of the global cybersecurity workforce at 4.7 million people, which is an increase of 11% year on year, with Asia Pacific registering a growth of over 15.6% and a worldwide gap of 3.4 million cybersecurity workers as on date. And as was mentioned by the Vice Chancellor, you would have a 7 to 8 million or 7.8 million shortfall by 2025 and 1.5 million in India itself. This gap is despite adding more than 4,64,000 workers in the past year. The cybersecurity workforce gap has grown more than twice. The Asia Pacific workforce gap was 52.4%. This is a concern as well as a great opportunity. By focusing on capacity building in the area of cybersecurity, governments could partially achieve their goal of creating and generating employment. The reason I say this is because governments around the world are formulating cybersecurity strategies and policies to effectively manage the risks which are global in nature. Cybersecurity is not a technology problem that can be solved. It is a risk to be managed by a combination of trained and aware human resources, practical and well thought out processes, defensive technology, astute analysis, and traditional diplomacy. It is clear that amongst the three pillars of information security, strengthening of human resources is the key aspect which can help the nation to secure its cyberspace in the long run. Research indicates that there is a 21% higher return on investment by investing in people. The issues with respect to training people in cybersecurity or creating defensive cyber warriors is that typically classroom and certification does not prepare individuals for a hands-on operational role. It provides them with a good level of supporting knowledge and some of the skills, but not necessarily ready for hands-on roles. Also, it should be noted that these trainings are being imparted as individuals and not as teams. So you cannot secure cyberspace individually because you need to defend as a team. So why should training be done individually? So that is something thought for you all to consider. So how do you take individual performers to team players collaborating and adapting against the latest cyber threats? This is where you need modeling and simulating operational scenarios and exercises for defensive cyber warriors to proactively identify, close, and defend against cybersecurity gaps so as to ensure operational readiness and effectiveness, in addition to hands-on assessments, validating configurations and change management prior to their implementation. Help in testing and evaluations of penetration testing, continuously build the knowledge base of the individual and the team. While we are discussing capacity building, do we really understand how capacity is defined? So I'm going back to the fundamentals as was mentioned by Amit. So what is the definition of capacity? So capacity should be viewed as a whole gamut, including institutional, governance, legal, technical, and operational. Today, the economic impact of cybercrime ranges from 0.01% to 1.6% of GDP annually across nations. The opportunity in front of us is how do we reduce the economic impact of cybercrime, stop cybercrime from becoming a growth industry, thereby achieving a positive impact on national security, public safety, and economic well-being by increasing
and improving trade, competitiveness, and innovation. If the goals and objectives of the government, industry, and academia are clearly aligned and defined, it will lead to economic development in terms of capability development in creating a large cyber security talent pool, collaboration amongst government, industry, and academia, conducting leading research in the area of cyber security, and development of cyber security technologies and services for India and for the world. Role of capability development is critical due to the following factors. One, technological capability provides an added layer of assurance in securing the nation's cyberspace. Two, increases impact of domestic players in the global market, adding to industry presence with a global footprint. And three, can help in building newer set of services around an innovative set of product lines. Building cyber capability in the country will demand concerted efforts from each of the stakeholders. Government plays a key role from policy viewpoint and enables the ecosystem to promote research and development, entrepreneurship, and facilitating skill development in the domain. The industry also needs to invest in research and development and building skills in deep technology areas. They also need to collaborate with the entrepreneurs, academicians, and researchers for facilitating them. The academia also has to play a vital role by focusing more on the foundation stone of the ecosystem, that is students and researchers. Extensive research in this domain will lead to strengthening the cyber posture of the nation and in turn help building a brand Secure India on the international arena. Cyber security startups and product companies contribute significantly to human resource development and research and development capability building in any country. Indian security product companies have also shown a great potential in the recent past. There are a large number of cyber security product companies in India. Just to give you an example, there are over 200 companies in Telangana alone. So that is what you will have to look at benchmarking yourselves and moving forward. And companies have had success in international markets as well. Some companies that started from incubation centers in academic institutions have been able to self-sustain in a very short span of time. The Indian cybersecurity product industry has grown to over $1.37 billion in the year 2021 at a compound annual growth rate of 36.5%. This shows that this industry is scripting a very promising industry. Promoting Indian cybersecurity innovation and entrepreneurship is one of the imperatives towards building robust capabilities for strengthening the cybersecurity posture of the country. By supporting these companies to build their capability, the domain will give a multi-fold return to the overall capability building agenda in the country. The Ministry of Electronics and IT is promoting innovation and entrepreneurship through startups, various activities such as Cyber Security Grand Challenge, Cyber Security Hackathon, Ministry of Electronics and IT Startup Hub, etc. It should also be noted that global organizations recognize the inevitability of cyber attacks and are enhancing their cyber security strategies through global capability centers which have been set up by bringing together in them the skilled people, cutting edge technologies, and next generation processes to secure themselves. According to the Data Security Council of India, the next generation functions that are being delivered from cyber global capability centers which are located in India are cyber security product management and automation, cloud security, cyber security operations, cyber resilience, emerging technology risks, in addition to some of the core cyber security functions such as identity and access management, cyber security risk assessments, vulnerability management, secure software development, application security, security and operations management, Internet of Things and operational technology security, managed service security providers, etc. Considering the proliferated concern about cyber crime due to increased digitization, a focused effort for capability in the law enforcement agencies and judiciary,
becomes very crucial. And the government is already putting efforts to train the law enforcement agencies and judiciary officers through its various initiatives such as cyber forensic training labs along with the industry. And this is where Secretary mentioned about the four-pronged approach of protection, awareness, assessment, and capability building or readiness and capacity enhancements, which becomes crucial because when you go towards Industry 4.0, you will not be able to compete until and unless you have skills in electronics and cyber for any industry, whether it is manufacturing, whether it is chemicals, etc., etc. So in the evolving digital economy globally, cyber preparedness of the country is becoming a major factor to drive business decisions and to strengthen the cyber posture of the nation. Capacity building in the domain is the key. Concerted efforts need to be put by the government, industry and academia to build a strong ecosystem of capacity building and facilitate the overall economy. I am sure that these efforts for capacity building will help in making India a destination for innovation and act as an investment magnet. Deep technology innovations such as Internet of Things, blockchain, quantum, artificial intelligence and machine learning will lead India to emerge as an innovation hub. As was mentioned right in the beginning by the Master of Ceremony, let me leave you also with a thought. She said that Ranchi is blessed with mineral resources in abundance and is known as the city of waterfalls and lakes. Today you have embarked on this project Aarabh, which means sunrise or the start of something new. It also means trustworthy or responsible. So can we take small steps in Jharkhand, since we are starting from and holding this function in Ranchi? So can we have a vision to ensure how do we transform RANCHI into responsible, agile, next generation cyber security hub for India? Thank you. थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके विचारों के लिए और ख़ास धन्यवाद रांची को एक नया रांची को नए तरीके से डिफाइन करने के लिए। और यकीनन हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमारी कोशिश होगी, हमारे विभाग की कोशिश होगी, सरकार की कोशिश होगी कि हम इन क्षेत्रों में आगे आएँ। हम इस इनॉग्रल सेशन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं जैसे सेक्रेटरी सर का निवेदन है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई सजेशन है, तो कृपया आप अपनी जगह पे हाथ खड़ा करेंगे और हम आमंत्रित करते हैं आपके विचारों को, आपके सवालों को। Hello. Good morning, everyone present over here, honorable panel. First question is that as for any implementation of any project, one thing the speed is also required. So we must have some plan in Jharkhand, that is a short term, middle term and long term. So what immediately as an institution, as we are running Guru Gobind Singh Education Society Engineering College in Jharkhand under JOT. So what like 6 months or 3 months program we should include, and we can also include it in our curriculum also for certain credits, 6 or 4 like this. Thank you, sir. I think an excellent question. I just want to give some thoughts on that. Maybe you all are aware that October every year is normally the Cyber Security Awareness Month. So from a short-term perspective, just to give you an idea what we did last October, which has just gone, we were able to cover about
60 crore Indians from an awareness creation perspective with the help of ISPs, internet service providers, and industry. So in the short term, what you should be doing is first create this awareness across the state, so including in schools, colleges. The participants who are the students who participate in this should be aware as to what they need to do, why they need to do, and what are the benefits. In schools, curriculum has already been introduced in places like Goa. They have a complete curriculum under the state education board where they are teaching children from, I think, 5th or 6th standard onwards about cyber security, etc. So the same can be incorporated here in this state for the schools, and similarly in the colleges, at least in the, as a general thing in first semester, second semester, where all the students are there from all the branches, you should have a curriculum on cyber which at least caters, that's why I said the information security and education awareness program that we have from the Ministry of Electronics and IT, which is already covering 52 colleges who are participating in this, and has already designed a curriculum. So you can use that curriculum and use it for the first and second semester. And when people from there you identify who are interested, then they can go into specific specializations in the cybersecurity field. I hope that gives you an idea from the short-term perspective, and then accordingly medium and long-term can be drawn up. Thank you, sir. Just a small prelude to it. Start with fundamentals, as I said. The first thing is with regard to the courses, you're already, correct me if I'm wrong, you're talking about the BTech courses, the graduation courses. The first thing is start making people, the children, to start using Linux. I'm talking about fundamental, basic things. Start making them use Linux and open source. That's the first and the fundamental. Because if you are working with Linux, automatically the fundamentals of system programming, understanding of the operating system for a computer science guy is immediate. Second aspect which I would recommend you is, and it's a recommendation to all the senior heads of the establishments, is please create a module for train the trainers. We may have X number of curriculum, we may have X number of courses, but if the people who are supposed to teach them, they themselves are not trained appropriately, I would think we would be asking too much from the teachers. The first thing, my suggestion would be in short term, first of all, start with the trainers, start with the teachers. Let your initial 6 months, if you are preparing for, let's say, a cybersecurity course, you should do it, let's say, if I would be planning, and that's just a thought, I would plan it for next year to start with that. But what I would do in this year is, I would take each of my faculty, specifically with regard to, let's say, the faculty which is teaching operating systems, the faculty which is teaching programming languages, the faculty which is teaching, let them be trained on their own subject, but in advanced way, in a more industry way, oriented way. Second part, give them exposure to the teachers themselves. Give first them exposure to working with the industry, to working with the professional institutions, so that they should understand that where is the gap. The third thing that you need to look into is, with regard to the teachers, is please compliment them. Incentivization is always a key. Many times we need to, if we are going for another set of courses, it would do a positive, reinforcement, incentivization. But unlike, the conventional way, involve this cross-mixing both sides. You send industry, you send teachers and everything to the industry, but at the same time, bring industry expert. Some of the best industry experts, they are from the city of Ranchi.
they are from the city of Jharkhand. You know, जैसे बालाजी हैं, yeah, he's been a global CISO of multiple companies, and there are multiple such examples that are there. My request is fundamentally bring those people, even if it is for interaction, if it is for a short lecture, and at the end of it we are using digital space, we are using digital video conferencing. But if I would be suggesting in the short term, first of all create the capacity for the teachers, for the educators. जो गुरु हैं उनको उनके it's not the fact that guru need to be trained, but yes they need to be exposed, they need to be, जैसे हमारी पुरानी विद्याओं में होता था कि गुरुओं को कुछ पीरियड के लिए तप के लिए वापस वन में भेज दिया जाता था, and they used to interact with yogis and everything, learn something new, and then they used to come back, create gurukuls, start teaching them. My suggestion is do that, but parallelly at the same time you can work out specifically industry driven courses. Again I would suggest, yes, Government of India is giving a lot of curriculum and all that, but at the end of it, whom you are training these people for? You are training these people for industry. My suggestion is, why can't you have one industry meet here itself, and you, rather than you call their HR people, you call their technical heads and all that, and let them formulate out a good curriculum specifically which is industry oriented. And once it is done by the industry itself, trust me, a lot of good things would happen. So that should be your medium term. And when you are looking into long term, you have to create out this entire ecosystem. Gestation should start from from the schooling itself. Please inculcate the interest of students in programming, in fundamental languages. Unfortunately, short term JavaScript kar lenge, scripting languages kar lenge, it gives you immediate return on investment. It's something like a 2-minute noodle. You just cook it and all. And every one of us know that a 2-minute noodle is not good for health. So if you have to create a dal roti. The dal roti is from the schooling itself. Create the teachers in terms of, that's part of the higher education or the technical education department and so on, that there should be curriculum, specialized courses. Start from the basic to cyber awareness. It should be till 8th. Subsequent to 8th onwards, there should be specialized languages that need to be taught. C and C++ should be fundamental. And that is how we need to fulfill it. It's just a recursor, I would say. Jamtara is something that is always attributed to this region. But this region, and I'm not saying just about Jharkhand or Bihar, this region was also the home to Nalanda, which we have forgotten. This was fundamentally the best university where people from all around the world used to come. So can we recreate that Nalanda? That's the fundamental thing. Can we change the way in which Jharkhand is being known in terms of cyber for Jamtara, rather than giving an example of Jamtara, can it be given in terms of Nalanda? But Nalanda, why the people used to come was because Nalanda's gurus were the best in the world. And again, as I suggest, we have to work with the fundamentals. I hope that answers your query. Thank you, sir. Anyone else? Hello. Good morning, sir. I am from Polytechnic Institute. Our Polytechnic students are linked between worker and manager, and they have great responsibility to our society. तो मेरा एक सजेशन है, अभी डॉक्टर शर्मा साहब बता रहे थे कि असेंबली लैंग्वेज इज एसेंशियल. तो माय सजेशन होगा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाते हैं डिप्लोमा इंस्टीट्यूट को, तो क्यों ना हम लोग, हमारे पास बैठे हुए हैं सीडीसी के डायरेक्टर जो अभी वाइस चांसलर भी हैं, तो हम लोग फर्स्ट ईयर में असेंबली लैंग्वेज का जो निमोनिक्स कोड होता है, जो जिसके द्वारा
हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और टुडे हम लोग इंस्टीट्यूट में AICT के द्वारा SIT प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो मैं चाहूँगा, यह भी मेरा सेकंड सजेशन है, कि हम लोग जो 21 दिन का प्रोग्राम चलाया जाता है SIT के द्वारा ऑल इंस्टीट्यूट में पूरे भारतवर्ष में, तो क्यों नहीं हम लोग इससे जो आज की जो कार्यशाला हुई तो उससे जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग फर्स्ट ईयर SIT प्रोग्राम में ऐड करें, क्योंकि SIT प्रोग्राम में स्टूडेंट को हम लोग पूरे सोसाइटी के लिए इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन और भी सारा पाठ्यक्रम के अलावा बहुत सा चीज़, योगा, बहुत सा जो आजकल जो NEP 20 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिखाया जा रहा है सारा जुटा हुआ है। तो मैं जो हमारे डॉक्टर शर्मा साहब बता रहे थे, मेरा यही सजेशन है कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो दैट इज निमोनिक्स, उस कोड को जरूर पढ़ाया जाए, यही मेरा सजेशन है। थैंक यू। जस्ट सिर्फ असेंबली लैंग्वेज नहीं, आई थिंक शायद द वे इन विच आई कन्फिगर्ड असेंबली लैंग्वेज and system programming is the key. Assembly, yes, so assembly language C, C++, system programming. That's, you are perfect, you are spot on. Thank you. Good morning all, respected dignitaries. So I'm from NIT Jamshedpur and greetings from NIT Jamshedpur. So just I want to inform you that number one is that we are having an MTech specialization on information security and system engineering from the year 2016. And every year students are passing out, especially they have been in the second year of MTech, they have to do a security project. Okay, so and we found that they are doing mostly they are doing project on cyber security. But the problem is that they are not getting enough exposure of industries, because okay, they are doing theoretically, we are teaching theory, but we don't have sufficient resources to give them practical exposure. Like they will work with the real crime defense team and got to know that okay, how really the crime happens, because theoretically explaining a crime and practically looking at the crime, there's a huge difference. So can we work on something that they will get interns only in the cyber crime industries or cyber crime areas only? And secondly, sir, I got an idea that in every UG or PG curriculum, we are having cyber security subjects, either cyber security or cyber threats. Can we add a project component as a part of curriculum? Let's say most of the private universities already added. So can we go for this universal, to every institute that along with the subject, everybody will do a mini project, a small project with respect to the cyber threats and defense. Thank you, sir. Just the last point, before I give it to Balaji. When I was doing my MS in UK, what was fundamental, they used to do it. And trust me, as a student, I used to hate it like anything. Students, how the mentality is. Every week, and I'm saying it with a fair amount of confidence, every week we had to submit one paper. It was I wouldn't say it was a research paper, but it was 3,000 words plus article every week. Trust me, we started off, we took it as a pain. But the moment we started working onto it, and this became part of the muscle memory, and it improved. So something of that sort, projects are fundamental to these particular things. And my suggestion is internships and working out is the key to such courses. And I think Cyber Vidyapeeth can help them out. So it is a very interesting question. In 2014, I carried out one study of 100 syllabus in IT of 100 universities across the world. And I think, IT, Kharagpur and Stanford, the mixture of the two were there in almost every syllabus. But why Stanford was creating more number of entrepreneurs, when I really delve into the details, it was all
internship on a very specific area. And in cyber defense area, we have got around 168 problem statement the world faces today. They are all real projects. You know, we can work together with your entity as a Cyber Vidyapeeth and come out with a completely practical, best project. We don't create paper tigers, you know, absolutely not. And we don't promote that because we have come from industry, we are not from the academia world. So let's work together on that. And I'm very confident that, you know, the moment you have the internship, which are actually product and practical oriented, automatically, you know, things will start changing. This is one of the learning from Israel as well. Thank you. Thank you, sir. One more question. Thank you, sir. You all have given a lucid presentation. And the questions is raised by the technical institutions teachers. I am from the normal universities, particularly I am the student of the social science. The question here, a reason is that we need a lot of trained person to incorporate in the cyber security. My suggestion and my disposition is that please create a curriculum for the student who are reading social science, economics, or others, so that they can get the knowledge of the cyber related problems and they can be employable in the, because we need a technical students, we need the technical person, but we have to trap the major society, major part of the, you know better than the Jharkhand is an area where the student more are, our secretary sir here is present here, we are GR ratio is very good. But our student is particularly in the social science and SARS. So that my request on part of my university itself, that please create a curriculum, and we are sitting in the JUT, therefore, so that all the students can get the knowledge. Thank you, sir. Cyber security is a interdisciplinary issues, and you know when the Israel started its journey for startups, you know, they ensured for every project, you know, there are team from multiple entities are engaged for that task. So social science was definitely not an exception. As a matter of fact, you know, they were carrying out one study for law enforcement agencies, you know, and I contributed to that journey with my bed. There were people from psychology, there were people from statistics, there were people from IT, and there were people from the law department. They were working together to come out with the product, because many times criminology is the one area which is read most in the social science and not in the IT side of the world. So it's as a matter of fact, Binova University has launched a very interesting course, post-graduation diploma in cyber defense. And you know the very interesting thing they did it, they said that +2 students, they are eligible for it, and there is no curriculum that they should be from mathematics and IT. Anyone and everyone, those who are very passionate about it, they should come and join the course. So I think that sort of disposition will start giving you a thirst of every span of the curriculum, whoever they are. If they are passionate about it, they can pick up the threads. World's best hackers, they are created at the age of 6 to 16s. And we need to understand them. 6 to 16, they don't have access to the alma mater. Which means that, you know, it can be accepted by this talent pool can be created from any field. So social science will be definitely not an exception. Thank you. Thank you. Yes. I just wanted to add on that, apart from the law side which is required, and I also mentioned cyber law, etc., which is crucial. Economics of cyber security is another area which has to be focused upon, and if you do not have the background of economics, you will not be able to get into the economics of cyber security at a country level, at an organization level, etc. And the other aspect is because you mentioned psychology, is the psychology of a cyber attacker and a cyber criminal needs to be understood, and that's what needs to be integrated into the
psychology subjects as to why and what is their behavior, why are they doing this, what needs to be done to change that behavior. So that itself is a complete science in itself, whether you call it social science or whatever. But yes, that is already going on in various places. There are curriculums available, and that should be incorporated. As far as earlier questions from polytechnic and engineering colleges, I will just request the JUT whole team. They can go through all the syllabus or curriculum for the polytechnic as well as engineering colleges for respective courses. And as per the UGC guidelines, they can make necessary directives to all the polytechnic and engineering colleges so that they could revise their curriculum syllabus and what the polytechnic principals just mentioned about that. First semester, second semester, how we can include as per the suggestion given by Dr. Amit Sharma. These things can be revised. About the social sciences thing, I will definitely say we should include cyber security as a minor, for all the universities and colleges. So any undergraduate in economics, maybe with the say physics or economics as a major, he or she can take cyber security or related branches or related courses as a minor along with the major courses. Thank you. थैंक यू सर. आज दिन भर की जो चर्चा होगी उसमें एक बड़ा होगा स्ट्रैटेजी प्लानिंग सेशन फॉर एडवांसिंग झारखंड एज अ साइबर डिफेंस कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड. इन तमाम बातों को लेकर और आपके सवालों और विचारों को लेकर हम फिर आएंगे, लेकिन अभी हम अपने रेगुलर सेशन के अंतिम पड़ाव पर आए हैं, जहां पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूं डिप्टी डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डॉक्टर विभा पांडे मैम से. A very good morning to all. We have had a wonderful morning session where we got the opportunity to hear such eminent speakers coming from Delhi, and we are really thankful to them. So first of all, I would extend my most sincere thanks to Almighty God who made this workshop possible in such a short span of time. It was not an easy task to getting Dr. Amit sir's time and Sanjay Bahal sir's time, but then God made it available, though the person who was behind all this, Balaji sir and Shashank sir, will always remain thankful to them. I extend my heartfelt thanks to Secretary sir, who gave his consent at once to organize this workshop. The moment Balaji sir contacted him, he was at once like, okay, you go ahead with this proposal. I want something, it was his words, that I want something new to happen, some new courses to be introduced for the youth of Jharkhand so that they can get some really employability-oriented education in the higher education institutions of Jharkhand. Sir has been forthright in accepting all positive recommendations for the upgradation of the quality of the education being given in our HEIs. And that is how this workshop was planned. I'm really thankful to sir for getting in this two-way discussion on this platform and allowing an opportunity for the stakeholders from the industry, academia, government side, all coming on a single platform and sharing ideas. I extend my heartfelt thanks to Dr. Amit Sharma sir, advisor on cyber security in Ministry of Defense, who has rightly pointed out how fundamentals are essential for cyber security. The first and the foremost thing which is required for developing skilled cybersecurity manpower is to have a clear understanding of the fundamentals. And it is very essential for that. It is very essential to train the trainers. So the capacity building of the faculty is very essential for this. I am very thankful to Dr. Sanjay Bahal sir, Director General, Certain Government of India, who also pointed out that the data, how data
plays an important role in envisioning the policies for the government on the government side. I'm very thankful to you, sir. He has traveled all the way from Delhi to attend this workshop and give us his valuable inputs to guide us on how we can go forward in framing the curriculum. We have to revise the curriculum in light of NEP, and so it is very essential that at this stage we get to know what all we have to do for the revision of the curriculum so that we can develop a pool of employable human resource. I am very much thankful to Vice Chancellor JUT who readily agreed our request for hosting this workshop, and he has been very kind and very nice throughout this event. Thank you very much, sir. Thank you. एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे गुजारिश करती हूँ, हम टी ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से इसी सभागार में हम रीअसेंबल होंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी है, आपस में डिस्कस करनी है हमारे टेक्निकल सेशन में. रिक्वेस्ट आप सभी से, टी ब्रेक है 30 मिनट्स का.
4 आवर्स मैं आपके साथ में हूँ। नेक्स्ट 4 आवर्स में हम लोगों को कुछ काम है जो साथ मिल करके करना है। लेकिन काम शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा एजेंडा को सेट करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और क्या मेथड होगा। अच्छा, आप सबों ने अपने बैग को देखा है खोल के अंदर में क्या है? वो कोई गिफ्ट नहीं है, उसमें कुछ भी गिफ्ट नहीं है, ठीक है? उसमें हर चीज़ कोई ना कोई एक्शन आइटम है। बहुत लोगों को शायद बैग नहीं मिला है, यदि नहीं मिला है तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा, जाने के पहले आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है? एट द एंड ऑफ इट टी ब्रेक के समय में मैं अनाउंस करूंगा, उस वक्त फिर से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। आपके बैग में एक 2-3 इंपॉर्टेंट आइटम रखा हुआ है। एक शपथ पत्र है, एक प्लास्टिक है, निकाल के देखिए, प्लास्टिक का एक पैकेट है। नहीं, एक प्लास्टिक होगा, देखिए किसी को मिसिंग है तो आप देखिए। एक इनविटेशन कार्ड है, देख रहे हैं इनविटेशन कार्ड? हाँ, और एक इनविटेशन कार्ड है, उसके पीछे में एक कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? इनविटेशन कार्ड के पीछे में एक शपथ पत्र है, ठीक है? हाँ, यस, एग्जैक्टली दैट। तो अभी हम लोग जो है इजराइल में जो कुछ हुआ था 2008 में, जो अमित शर्मा जी ने बताया, और उसमें बहुत सारा फेलियर्स था और बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज आया। तो जो लेसन लर्न था वो मैं कुछ साझा करूंगा और हम लोग कोशिश करेंगे देखने के लिए कि कैसे हम उसको आत्मसात करें और फिर कैसे हम उस कदम की तरफ बढ़ाएं जहां पे गिरने की मौका ही नहीं मिले। और हम जो इजराइल में 10 साल 12 साल में हुआ, क्या वो 4-5 साल में कर सकते हैं? Ladies and gentlemen, kindly occupy your chair. No chit-chatting inside the room. तो नेक्स्ट 3-4 आवर्स में हम लोग को 4-5 काम करना है, साथ में मिल करके, टीम बना करके काम करना है। हमारे बीच में इंडस्ट्री के और एकेडमिया के काफ़ी लोग आए हुए हैं। हाँ, नहीं, जो इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं उनकी अपनी पर्सपेक्टिव है, जो एकेडमिया है उनका क्यूरिकुलम एक पर्सपेक्टिव है। तो दोनों के बीच में अपने आप में ये पहला मौका होगा कि जहाँ पे दोनों को एक दूसरे का विचार रखने का मौका मिलेगा। आप जो भी स्टूडेंट बनाते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? इंडस्ट्री में जाता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है। तो नेचुरली रिक्वायरमेंट उनकी है तो सिलेबस उनके हिसाब से बनेगी, और जो सिलेबस में जो कुछ लिखा हुआ है उससे ज़्यादा भी इंडस्ट्री को करना बोलेगा तो आपको प्रोजेक्ट करा के करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट 2-3 आवर्स में ये दोनों के बीच में एक समन्वय क्रिएट करेंगे और हम लोग करीब 10 ग्रुप बनाएंगे। इस पूरे टीम मिला करके 10 ग्रुप बनाएंगे और एक कागज रखा हुआ है आपके हर एक के पैकेट में जिसका नाम है आइडिएट। वो आइडिया वाला डॉक्यूमेंट है, उसको एक बार निकाल करके हाथ में देखें क्या है आइडिएट डॉक्यूमेंट। यस, बहुत ही बढ़िया। सबके पास में है ना आइडिएट डॉक्यूमेंट? यदि नहीं है तो और भी अवेलेबल है, दिलवा दूंगा। अच्छा, इसमें जो आइडिया है ना, बड़ा सिलेक्टेड आइडिया डालना है, तो हमारे सुनने के बाद ही उस आइडिया को उसमें डालेंगे, ठीक है? क्योंकि जो आइडिया होगा वो रेलिवेंट होना चाहिए हमारे 4-5 साल के आगे का जो काम करेगा झारखंड कॉरिडोर बनाने के लिए, उसके लिए वो सारा आइडिया का उसके अंदर में डालना पड़ेगा। और जो कॉमन आइडियाज निकल करके आएगा उसको हमारी एक एक्सपर्ट कमिटी उसको वैलिडेट करेगी, और जो अच्छे आइडिया निकल करके आएंगे उन आइडिया के ऊपर में फिर हम लोग सेकेंड हाफ में प्लानिंग करेंगे, ठीक है? आप लोग तैयार हैं हमारे साथ? देखिए, ये एक नई कहानी लिखने का मौका है। एक क्लीन स्लेट से एक नई कहानी लिखेंगे। सेक्रेटरी साहब ने सुबह में एक शब्द बोला था कि जामताड़ा का जो ब्लैक स्पॉट है उसको क्लीन करना है। क्लीन करने की जरूरत नहीं है, वो एक ब्लैक स्पॉट छोटा सा एक बड़ा सा गोल्ड स्पॉट बनाएंगे हम लोग, ठीक है? तैयार है आप लोग सब इसके लिए? बहुत ही बढ़िया। तो पहले हम लोग कुछ बात करते हैं कि चैलेंज क्या है। हम लोगों को सुबह में सुना अमित भाई साहब ने बहुत ही की समरी में बोला कि हमें वो क्या करना है जो साइबर का कॉरिडोर बनने का पहला सीढ़ी क्या है, फाउंडेशन को कैसे मजबूत करें, ठीक है ना?
जॉब के लिए जो प्रोग्रामिंग सीखना है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या बिना हम सतह पे गए बगैर घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है? मेरा नाम बालाजी है और पिछले 30 साल से सिर्फ एक ही काम आता है, साइबर का। 94 में शुरू किया था, फिर कभी घूम के नहीं देखा। मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। गिरिडीह थोड़ा बड़ा शहर है। मेरी गांव है का नाम है बलथरवा, और बुढ़ई करके एक देवघर के पास एक जगह है, वहाँ के बाद एक छोटा सा गांव है झुरमुट है। और मैंने पढ़ाई वहाँ पे, एक स्कूल था जो बरगद पेड़ के नीचे में था, वहाँ से शुरू किया था। 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, और वहाँ पे उस पे पुल नहीं बना हुआ था, उस नदी पे पुल नहीं था, एक नदी क्रॉस करना पड़ता था। उसका पुल का निर्माण पुरवार साहब ने किया है। वो उन्होंने प्लान किया और उसको एक्सिक्यूट करा दिया। पहला बार मुझे 2001 में मैं गया, गाड़ी लेकर के अपना गांव गया था। उसके पहले 9 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ी से सामान जाते थे। एक इच्छा शक्ति की जरूरत है समाज में परिवर्तन करने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी का जो शुरुआत किया था, तो उस वक्त मुझे हैकिंग पता नहीं, जो कुछ था वो हैकिंग था, मुझे बहुत दिन के बाद पता चला। लेकिन इच्छा शक्ति थी कि मैं ब्लैक स्क्रीन में काम करूं और फिर शायद दोबारा कभी GUI जो होता है ना, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, उस पर कभी देखा ही नहीं। सेम बर्कले यूनिक्स, सेम ब्लैक स्क्रीन। तो बड़ा एक सोच के साथ मैं वापस आया हूं। मैंने 50 साल में रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि मुझे पता चला एकेडमिक वर्ल्ड में रिटायरमेंट होता ही नहीं है। तो मैंने बोला फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। वैसे वेद में भी लिखा हुआ है कि भाई जो पढ़ाए, जो कुछ सीखे है आपने, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर है, वापस अपने समाज में करना है। तो मैं इसी ड्रीम के साथ वापस आया हूं कि मुझे एक संकल्प लिया है, छोटा सा संकल्प है, 1 मिलियन साइबर रक्षक देश के लिए बनाना है नेक्स्ट 5 साल में। साथ हैं आप? जय गणेश। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी संस्था में बहुत दिन तक विदेशी कंपनियों में काम किया। बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया, उनके साइबर डिफेंस टीम में था। फिर क्वालकॉम में काम किया। हमेशा इस बात का कचोटता था दिल कि अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, और हर बार वापस आ जाता था। कई बार जॉब ऑफर विदेश जाने का मिला तो हमेशा यही लगा कि नहीं, गांव वापस चलना है, गांव की ओर। जहां से शुरू किए थे अंत भी वहीं करेंगे। जब मैं क्वालकॉम में था ना, तो मुझे एक बड़ा मजेदार चीज, एक स्टेटमेंट मुझे मिला। एक आदमी है, उनका नाम है संजय झा। संजय झा अपने BIT मिश्रा के स्टूडेंट रहे हैं, और वो ग्लोबल फाउंड्री के CEO थे। क्वालकॉम में वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और मोटरोला के पहले MD थे। वो 90s में MD थे। एट द एज ऑफ 35 ही वाज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा रेलिवेंट है। हमारा नेक्स्ट 3-4 साल इस राज्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। बोला, बालाजी, एवरीबडी इज बॉर्न विद डिफरेंट DNA। हर एक आदमी का DNA डिफरेंट है। इसमें 100% मतैक्यता है। हर एक आदमी को पता है कि मेरा DNA डिफरेंट है। If your DNA is different, you are bound to produce something very different which nobody else can do it. हर आदमी यूनिक है। भगवान ने आप सबों को यूनिक बना के भेजा है। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप एक दूसरे की तरह है कि नहीं। पिताजी बोलते हैं मेरे तरह बेटा मेरा नहीं है, माँ बोलती है बच्ची मेरे तरह नहीं है। अरे भगवान ने ही यूनिक बना के भेजा है, तो फिर यूनिकनेस को जो है सेलिब्रेट करो। तो आप सबों के पास में वो यूनिकनेस है। नेक्स्ट 3 घंटे में ना वो यूनिकनेस झलकना चाहिए, जो प्लानिंग है उसमें झलकना चाहिए। तैयार है इसके लिए? हाथ उठा के। यस, बहुत बढ़िया। हम एक संस्था, छोटी सी संस्था बनाया, हम लोग NGO बनाया है। और संस्था छोटी है लेकिन मुद्दे काफ़ी बड़े हैं। पिछले 2 साल में हम लोगों ने करीब 15,000 बच्चों को ट्रेन किया है। अच्छा, वो ट्रेनिंग मैंने सिक्योरिटी का नहीं किया है। लोग बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी की संस्था चलाते हो और ट्रेनिंग आप असेंबली प्रोग्रामिंग करते हो। अमित ने बोला ना कि असेंबली प्लानिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग ही पढ़ाना है, वहाँ से शुरू करता हूँ।
और उसमें जो अच्छे बच्चे निकल करके आते हैं उसको फिर आगे बढ़ाता हूँ। तो यदि आपके पास असेंबली प्रोग्रामिंग सीखने का मन है और सिस्टम इंजीनियरिंग सीखने का मन है तो हम लोग वो काम फ्री में करते हैं, पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए। अभी पिछले ही वीक हम लोगों ने करीब 12,000 बच्चों को सर टीम के साथ में, संजय भल सर के साथ में, टीम के साथ मिलकर काम किए। 12,000 बच्चों को हम लोगों ने असेंबली प्रोग्रामिंग सिखाई। 10 दिन का कोर्स था जो 20 दिन तक चला, क्योंकि कॉलेज में जो है वो सिस्टम इंजीनियरिंग वाला पोर्शन आजकल शायद 2-4 पन्ने का किताब का पन्ना मात्र बन के रह गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाने पठन पाठन में है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ साइबर डिफेंस है और मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं इवन साइबर क्राइम के बारे में सोचता नहीं हूँ। अमित सर ने बोला ना, बहुत छोटा सा सब, वो पेन है बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। 1.3 करोड़ आदमी के पास पेसमेकर है, एक मेलवेयर सब पेसमेकर को बंद कर सकता है। नागासाकी इन हिरोशिमा में 3000 मिला, इतिहास के हर एक पन्ने में दर्ज हो गया। 1.3 करोड़ आदमी एक साथ मर सकते हैं, उसके लिए किसी को चिंता नहीं। और जो चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम होने वाला है। इंडस्ट्रॉयर 3.0 के बारे में डिस्कशन हुआ था, ब्लैक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया मॉर्निंग में हम लोगों ने। सिस्टम को बर्न कर सकता है, जला सकता है। एक बार पावर सिस्टम से ब्रेकडाउन हो गया, बर्न हो गया, तो महीनों तक बिजली उस संस्था से नहीं आ सकती है। तो चैलेंज काफी बड़ा है। साइबर क्राइम एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम लोग जो साइबर डिफेंस कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं वो क्राइम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्लानिंग में ना वो क्राइम से रिलेटेड मुझे कोई पॉइंट उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप यूनिक है तो कुछ नया चीज बनाएंगे। ठीक है, तो वो भी आइडिया चाहिए, आइडिएशंस में वो भी चाहिए कि हम साइबर के स्पेस में क्या कुछ कर सकते हैं। हमारी संस्था जो है छोटी संस्था है, 22 आदमी की संस्था है। 80 पेटेंट फाइल किया हुआ, 40 पेटेंट ग्रांटेड है, और सारे के सारे पेटेंट बनाने वाले झारखंड के हैं। आप समझ रहे हैं? ये बड़ा नंबर है, दिखाई नहीं पड़ता है, बड़ी छोटी है। आप लोग कितने लोग हैं? 400 लोग के करीब में है इस रूम में। हर आदमी तय कर ले कि एक साइबर सिक्योरिटी का टूल मुझे नेक्स्ट 2 इयर्स में बनाना है, तो 400 नए टूल्स बनेंगे झारखंड में। अच्छा, ये टूल बनाना कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है, सिर्फ बच्चों को वो मौका देने का काम है कि मुझे पेपर टाइगर नहीं बनाना, प्रोजेक्ट कागज नहीं चाहिए मुझे, 22 पन्ना का कॉपी पेस्ट किया हुआ कागज नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही काम। तो जो प्लानिंग में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे और जो डॉक्यूमेंट करेंगे उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि साइबर डिफेंस से रिलेटेड पॉइंट ही हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। पेडागॉगी पे डिस्कस करेंगे कि कैसे पेडागॉगी को इंप्रूव किया जा सकता है, क्यूरिकुलम को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाए, मेंटर को कैसे हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, क्या मेंटर को हम 10,000 मेंटर, 5,000 मेंटर को ट्रेन कर सकते हैं क्या, तो वो प्लानिंग का हिस्सा बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे प्रोसेस में है कि ये 500 जो ज्योति पुंज है वो दूसरे के घर को कैसे इल्यूमिनेट करेगा, कैसे उसको और रोशनी देगा। तो आप जो 500 लोग जो आए हैं इस संस्था के अंदर में, इस कमरे के अंदर में, ये 500 इग्नाइटेड माइंड चाहिए एट द एंड ऑफ इट, और आपको एक टॉर्च बीरर के तरह बाहर जाना पड़ेगा। आपके पास एक शपथ पत्र है, आपके पास में एक इनविटेशन कार्ड है, उसके पीछे में एक शपथ पत्र है। जरा हम लोग खड़ा होकर उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तैयार हैं आप? पहले निकाल लीजिए, फिर हम लोग खड़ा होकर पढ़ेंगे। जिनको नहीं मिला है बैग, इस वक्त परेशान ना हो, खड़े हो जाए, ठीक है? – 2008 में मिस्टर नेतान्याहू जो है 70 लोगों के साथ में शपथ लिया था। बड़ा सिंपल सा शपथ था, टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ा लिमिटेड था, 2 या 3 पॉइंट बोला था हम लोगों ने, ठीक है? तो हम बोलेंगे, हम लोग साथ में उसको रिसाइट करेंगे, ठीक है? We shall promote Jharkhand
as Cyber Defense Corridor of the world. We shall create a million cyber engineer in next 10 years. We shall work for attracting $5 billion of investment in Jharkhand by 2027. Thank you. बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद प्लेस लेने के लिए, क्योंकि ये जो है एक कमिटमेंट है, एक छोटा सा रेसिटेशन से नहीं है, ये कमिटमेंट है कि मुझे करना है, और आप सबों के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है। आपके पास आपके बच्चे हैं हजारों के संख्या में, आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं वहां हजारों की संख्या में बच्चे हैं, आपके पास वो मौका है, कैसे उसको इग्नाइट करें। एक छोटा सा डायमेंशन मैं दे रहा हूं, इसके बारे में बहुत बृहद चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 3 डायमेंशन है साइबर वॉरफेयर का, ठीक है। चूंकि वो प्लानिंग प्रोसेस में आपको समझाने में थोड़ा सहूलियत होगी, आइडिएट कैसे करें। किसी भी वॉर में 3 चीज होती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एक होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, टेलीविजन देखते हैं, वीडियो आता है बहुत सारा, 50 टैंक एक साथ उड़ा दिया गया। देखा था वीडियो, बड़ा फेमस हुआ था वो वीडियो कि 50 टैंक लाइन से हाथ से उड़ा रहा है। एक मिसाइल है जो अमेरिकन मेड मिसाइल है, स्टिंगर, वो लगाता है और उड़ जाता है 50 टैंक। मैंने उसका वीडियो का एक जो है मेटा डाटा का स्टडी किया। जब स्टडी किया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उसमें जो डाटा है, उसमें जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो मेंशन है वो पटना का है, मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स का। वहां पे एक कंपनी है, मेरा एक दोस्त है, उसने पूछा यार ये कहां का है, तो बोला एक कंपनी है जो पटना में वो हॉलीवुड के मूवी के लिए वीएफएक्स का काम करता है, स्पेशल इफेक्ट और वीडियो का काम करता है। ये है ट्रू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दुश्मन को कमजोर करने के लिए, मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। आपके यहां सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक रिपोर्ट आएगा बगल से कि हंगर इंडेक्स में आप बहुत नीचे हैं, इतना नीचे है कि श्रीलंका भी आपसे ऊपर, और भुखमरी श्रीलंका में हो रहा है। ये पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो एक डायमेंशन साइबर का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जब भी हम एजुकेशन की बात करेंगे साइबर डिफेंस का, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक इंपॉर्टेंट काउंटर मिसाइल बिल्ड करने के लिए कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। और उसी से रिलेटेड एक है कॉग्निटिव वॉरफेयर, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अभी सबके पास सोशल मीडिया है, सब फेसबुक में है, ट्विटर में है, इंस्टाग्राम में है, लिंक्डइन में है। ये सारी जो सोशल मीडिया के टूल है वो सारी स्ट्रेटेजिक वीपनरी है, आपके ब्रेन को पैरालाइज करने के लिए, आपको जॉम्बी बनाने के लिए, आपके ब्रेन के साथ खेलने के लिए, और आपसे वही कराने के लिए जो फॉरेन का एडवर्सरी चाहता है। और ये गेम जो है ना हर समय चलता है, हर वॉर में चलता है। महाभारत में देखेंगे तो उस वक्त भी चलता था और अभी भी चलता है, कोई चेंज नहीं हुआ है। चाणक्य को याद कीजिए, बिना एक रॉकेट लॉन्च किए हुए सारे राजाओं ने सरेंडर किया था। ब्रेन गेम है ये, पूरा का पूरा ब्रेन गेम। तो साइबर वॉरफेयर में एक और जो एंगल है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर का है। सोशल मीडिया का कोई भी टूल अपना नहीं है, और हमको बड़ी खुशी होती है सोशल मीडिया का सारा फॉरेन के टूल यूज करें। जो इंडिया में जो टूल एक आध है उसको कोई यूज नहीं करता है, और आपके दिमाग के साथ उसको प्ले अराउंड किया जाता है। तो उसके अगेंस्ट में क्या काउंटर मेजर बिल्ड करना है, ये एक और बड़ी साइबर वॉरफेयर का काउंटर मेजर बिल्ड करने के लिए कैपेबिलिटी बिल्ड करना है। तो ये भी एक डायमेंशन है जो हम लोग प्लानिंग करेंगे तो उसमें देखने की मौका मिलेगा। और लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो साइबर वॉरफेयर। ईरान ने 2008 के पहले 2006 में अनाउंस किया कि 2010 में हमारे पास 10 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। दे वर वेरी केपेबल, उन्होंने सारी प्लानिंग करके रखी थी, बट एक छोटा सा मालवेयर स्टक्सनेट ने उनको सारे प्रोजेक्ट को क्रिपल कर दिया। 2022 में फिर वही कर रहे हैं कि नेक्स्ट 4 ईयर में हमारे पास बन जाएगी।
तो ये जो मैलवेयर है ना, जो कैपेबिलिटीज है, जो सिस्टम फ्लॉज हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके लिया जाता है। जो नेक्स्ट जनरेशन का साइबर वॉरफेयर ऑलरेडी चल रहा है। कई मशीन को रिमोटली बर्न कर दिया जाता है, रोस्ट कर दिया जाता है, टेक्निकली रोस्ट कर दिया जाता है। रोबोटिक आर्म्स रोस्ट हो रहा है, गरम होकर के जल जा रहा है। आप आईटी में सर्वर का बैकअप रख सकते हैं, लेकिन रोबोटिक आर्म्स का बैकअप नहीं रख सकते हैं। रसिया का एक एंटिटी है जो बैलिस्टिक मिसाइल का आउटर नोज बनाता है, जो मिसाइल के ऊपर वाला कवर होता है ना, ब्रिलियंट मेटलर्जी प्रिसिशन सिस्टम्स को, उसकी जो है एक छोटी सी एंटिटी में एक मेजर मैलवेयर का अटैक हुआ और वहां का सारा सिस्टम्स टेक्निकली बर्न कर दिया गया। एक वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए मुझे बनाने के लिए। अब वो कंपनी के पास में जो सामान उन्होंने बाहर से लेके लगाया था, हर चीज तो इंडिजिनस होता नहीं है, सप्लाई चेन है सारा। तो नेचुरली क्या हुआ कि उसके पास वो वाली एंटिटी है, वो डिसफंक्शनल हो गई। अब इस तरह की बहुत सारी कंपनियां तो होती नहीं है कंट्री में, और रिपेयर्स जो है जिस कंट्री से आता है वो ब्लॉक कर दिया कि अब रिपेयर नहीं मिलेगा आपको। वॉर आप इसलिए हार जाते हैं कि आपके पास रसद नहीं है। तो साइबर वॉरफेयर का जो गेम है ना, वो बहुत ही डिस्क्रीट और बहुत ही जबरदस्त गेम है। और एक छोटा सा स्टडी कर रहा हूं, यूक्रेन, लेसन लर्न फ्रॉम यूक्रेन। करीब 12-14 हज़ार पेज का हम लोगों ने डॉक्यूमेंट निकाला इंटरनेट से कि क्या कुछ चल रहा है। अब जैसे कोई अटैक होता है हमारे ऊपर में, तो सर्टिन एक रिपोर्ट बनाता है कि इस तरह का अटैक है, इससे बचने के लिए ये काम करें। तो पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री अपना अपना रिपोर्ट बनाता है। तो मैं उसमें से करीब स्पेसिफिक जो अटैक का टेक्निक्स था और उसको बचने के लिए क्या करना, उसका रिकॉर्ड्स को सारे वर्ल्ड का जितने भी लैंग्वेज में सबको निकाला। करीब 12,000 पेज का डॉक्यूमेंट है। यूनिक आर्सेनल्स जो है अपने आप में एब्सोल्युटली यूनिक आर्सेनल है, उसकी संख्या जो मिनिमम जो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो करीब 8,000 के करीब में है। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लेकिन वो 8,000 यूनिक आर्सेनल्स हैं। AK-47 एक आर्सेनल है, ठीक है। 8,000 आर्सेनल्स है जो यूज किया गया, जो पब्लिक डोमेन में जिसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। यदि ये 8,000 वेपन हमारे ऊपर चलाई जाएगी, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए ये नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए लड़ने के लिए ना सिपाही का संख्या कम होता है, जो अटैकर्स की संख्या ना बहुत कम होता है। जम्मू कश्मीर में जब बैटल होती है तो 5 आतंकवादी आते हैं बचाने के लिए, कितने मिलिट्री के लोग लगे हुए हैं? BSF लगा हुआ है, CRPF लगा हुआ है, राष्ट्रीय राइफल लगा हुआ है, आर्मी लगा हुआ है, लोकल पुलिस लगा हुआ है, हजारों की संख्या में। अटैकर क्या है? 5 आदमी है। तो जब भारत के पास में अटैक करने की कैपेबिलिटीज की जरूरत होगी तो शायद चंद आदमी का जरूरत होगा, लेकिन डिफेंड करने के लिए, हर घर को डिफेंड करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। MSME में पिछले 6 महीने में जितना अटैक हुआ है उसका नंबर माइंड बॉगलिंग है। 2018 में सर्टिन का रिपोर्ट है कि हम 50,000 इंसिडेंट्स हैंडल करते थे। 2021 में सर्टिन का रिपोर्ट है हम 15 लाख अटैक हैंडल करते हैं। इस साल का नंबर मैं बता सकता हूं 30 लाख से कम नहीं होगा। जिस स्पीड से अटैक्स बढ़ रही है उसके बगैर, उसके विरोध में प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड करने की जरूरत है। तो साइबर का ये 3 डायमेंशन से रिलेटेड हम लोग प्लान करेंगे कि इसमें क्या कुछ करना चाहिए। इजराइल ने जब काम स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक छोटी सी सेटअप से स्टार्ट किया था, और एक्चुअली जिस जगह स्टार्ट किया था वो तो डेजर्ट था, एक मेकशिफ्ट ऑफिस से किया गया था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पहला जो मीटिंग हुआ था, मुझे याद है क्योंकि आई वॉज वेरी प्रिविलेज कि मैं आई वॉज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री कोलेबोरेशंस में, मैं CIA की तरफ से भेजा गया था रिप्रेजेंटेटिव। तो पहला जो मीटिंग हुआ तो डेजर्ट में हुआ था, रात में 12 बजे। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था यहां पे क्यों किया जा रहा है। तो एक्चुअली जो प्लान ये था कि यहां को से ही हम इसका शुरुआत करेंगे। 2020 में जनवरी 28 तारीख को, उस वक्त स्टार्ट हो गया था कोरोना वायरस का
28 तारीख को साइबर टेक का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं गया था वहाँ पे, लास्ट वही गया, हर साल जाता था, लास्ट 2020 में गया था। तो वो नहीं है, क्योंकि वो करीब 150 बिलियन डॉलर का मार्केट एक छोटा सा जगह में, जहाँ पे एकेडमिया भी बैठा हुआ है, इंडस्ट्री भी बैठा हुआ है, और स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, रिसर्चर स्टार्टअप भी बैठे हुए हैं। तो जब प्लानिंग हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि क्या हम इस तरह का सोच के साथ आ सकते हैं, क्या JUT एक ऐसे हब के तरह काम कर सकता है, क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एक ऐसे हब के तरह काम कर सकता है, हब एंड स्पोक मॉडल पे, क्या हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज करें, एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल को ले, मेंटर्स को फिर से ट्रेन करें, रीपर्पस करें नई जनरेशन के लिए, और फिर इस कोर्स को पूरे स्टेट में लागू करें। तो वो जो प्लानिंग प्रोसेस का जो काम करेंगे, उसमें साइबर क्राइम वाला पोर्शन को अभी के लिए छोड़ दीजिएगा, वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही है, तो हम लोग इसी को फोकस करेंगे, साइबर वॉरफेयर को। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज होंगे हमारे पास सेशन के बाद में, इस सेशन के बाद हम लोग लंच ब्रेक लेंगे। लंच ब्रेक लेने के पहले आप लोग के पास जो आइडिएट कार्ड है, उसमें आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है ना कि हम इसके लिए क्या करना चाहिए, सेटअप करने के लिए क्या क्या मिनिमम चीज करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ भी मत लिखिए कि जो किया नहीं जा सके आज के समय में। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए जिसमें आपको लगे कि हमको 1000 करोड़ सरकार को देने की जरूरत हो। एग्जिस्टिंग सेटअप में हम क्या रिपर्पस कर सकते हैं, ये पहला थॉट होगा। वो सारी चीज जो 2 टुकड़े में प्लानिंग बटेगी, एक टैक्टिकल होगा जो मुझे नेक्स्ट 6 मंथ में करना ही है, उसके बगैर ये 5 साल का ड्रीम अधूरा रह जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में हमको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, 5th ईयर में क्या करना है। तो अपने पूरे जो आइडिएशन आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसमें 3-4 बुलेट पॉइंट डालेंगे। एक टैक्टिकल होगा और एक स्ट्रेटेजिक होगा। स्ट्रेटेजिक कि हम इस तरह से बिल्ड करेंगे, इस तरह से कोलैबोरेट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होता है किसी भी सरकार के पास में, किसी संस्था के पास रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। तो प्लानिंग के समय में इस बात का ध्यान रखें कि हम मिनिमम रिसोर्स में, एग्जिस्टिंग रिसोर्स में क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये ड्रीम करना बंद कर दें कि ऐसा करने से, यदि 50 करोड़ इन्वेस्ट करने से हमारा कुछ बड़ा हो सकता है जिसमें मिलियंस हम अर्न कर सकते हैं, तो उसको सोचने में उसको कोई बुराई नहीं है और उसको डॉक्यूमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रूगल वे में हम कैसे कर सकते हैं। भारत की जो पूरी जर्नी है पिछले 30-40 का, वो फ्रूगल इनोवेशन है। आप पूछेंगे किसी की DRDO में कितने पैसे मिलते हैं, तो नहीं के बराबर पैसे मिलते हैं, लेकिन वो फ्रूगल इनोवेशन हमेशा होता रहता है, नया से नया चीज बनता रहता है। नम्मी नारायण वाली सिनेमा देखा था ना? नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फ्रूगल इनोवेशन किसको कहते हैं, उसमें दिखाया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इनोवेशन में आउट ऑफ बॉक्स थिंक करना है, लेकिन फ्रूगल रखना है, ताकि कॉस्ट इतना अनलिमिटेड नहीं हो जाए कि वो इंप्लीमेंटेबल नहीं हो। तो 2 काम करेंगे। लंच के बाद हम लोग जब वापस आएंगे, तो लंच के दौरान में कोई चिट चैट नहीं करेंगे। खाना खाइए, खाना लीजिए, प्लेट लीजिए, खाना एंजॉय कीजिए, और साथ में सोचिए कि क्या 10 पॉइंट मुझे लिखना है। और फिर वापस जब आएंगे तो आपके पास 15 मिनट टाइम रहेगा उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए। उसके बाद हम लोग 10 ग्रुप बनाएंगे। इतने में करीब 400 लोग हैं, तो 40-40 लोग एक एक ग्रुप में आएंगे, और 40 लोग अपने हर एक डॉक्यूमेंट को रीड आउट करेंगे ग्रुप में। 40 ग्रुप का 10 ग्रुप बना हुआ है। 6 ग्रुप आपको जो जहां डाइनिंग हॉल है वहां पे 6 टेबल रखा रहेगा, और 4 टेबल बाहर में रखा रहेगा। हर एक टेबल एक नदी के नाम पे बना हुआ है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा। कौन किस ग्रुप में जाएगा वो हम लोग यहीं पे डिसाइड करेंगे। हम लोग एक नंबर काउंटिंग करेंगे, और जो नंबर आएगा 1, जो जितने लोगों का 1 होगा वो 1 वाले टेबल पे चले जाएंगे, 2 वाले 2 टेबल पे चले जाएंगे। ठीक है? तो सेकेंड हाफ में हम लोग वहां पे जाके रुकेंगे। ठीक है? उसके बाद हमारा प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसके बारे में डिस्कशन हम लंच के बाद में करेंगे। तैयार हैं आप लोग? नेक्स्ट 1 आवर 40 मिनट जो नाश्ता खाना के लिए मिला है, खाना एंजॉय कीजिए,
लेकिन कोई गॉसिप मत कीजिए, फोकस होकर सोचिए कि हमको क्या करना है, जिसमें झारखंड और भारत कैसे साइबर स्पेस में अपना डोमिनेंस डेवलप करेगा। और ये रेप्लिकेबल मॉडल है, हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो पहले नहीं किया गया हो। तो यहीं पे हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग सारे लोग लंच के लिए जाएंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है, बल्क में जाइए, आराम से शांतिपूर्वक, कोई नॉइज नहीं, वहां पे कोई नॉइज नहीं चाहिए। लंच लीजिए, क्योंकि जब आप आवाज करेंगे आपस में ना, तो आपका सोचने का प्रोसेस रुक जाएगा। तैयार हैं आप सभी? ठीक है, एक लंच ब्रेक लेते हैं क्विकली, ऑलरेडी लेट हो चुका है। लंच के बाद वापस आते हैं और फिर आइडिएट के डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। धन्यवाद।